नमस्कार नमस्कार मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKB और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आपको वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। और हम दोनों हैं इस वक्त नेशन नाउ पर, और नेशन नाउ कहाँ है? हमेशा आपके साथ। प्रदीप जी, द प्राइम मिनिस्टर गोज टू US, the opposition goes to Patna. So lots and lots of things happening all over the place. And tomorrow being June 21st, World Yoga Day, the Prime Minister is going to lead the United Nations in yoga, which is fantastic. And then after that, of course, the huge reception awaiting him in Washington DC, and then the address to the Indian diaspora at the Kennedy Center. And of course, he'll also be addressing the joint houses of US Congress, which is fantastic. Meeting the industrialists and, taking business in India. The Yes. US, the top corporates of US ready to invest in India. It seems to be the way things are. And we are ready to spend $80 billion Bilkul, sir. in defense equipment. Yes. I think that is Because one of the, you need to. and that is one of the reasons You for need the to big red fortify carpet. the army, you need to fortify our Absolutely. defense forces. You don't have a need to choice. have the latest weapons, because on one side you've got the Chinese. And Most they are- importantly. most importantly, and then you need to deal with them. You need to give our soldiers the best you have in the industry. So the morale is always high. And not only that, we have just ordered 5 new submarines from Germany. Exactly. That's worth another $5.8 billion. Yes. I hope that continues. Thank God somebody is actually looking at the Navy. अभी तक क्या था कि साहब कांग्रेस के राज में, very frankly speaking, the most neglected area were the Indian Defence Forces. I mean, it was like terrible. I don't even want to go into that. Do you remember the Defence Minister of the UPA? I remember Mr. Anthony, Yes. the man who used to cry at the drop of a hat. And he would never sign on a file. ये जो राफाल डील बाद में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के दौरान जो राफाल 36 राफाल जो यहाँ पर आए हैं, अब एंटनी साहब ने तो फाइल पे साइन करने से मना कर दिया था. I don't know what he was thinking of. He is a bit like our Prithviraj Chauhan over here in Maharashtra, where everybody used to say that you enter his office and all that you see are unopened, unread, unsigned files. Right, at the moment with us from the BJP, we have Mr. Ali Darwala of the Bharatiya Janata Party. Ali Darwala sahab, namaskar. Good evening, namaskar, Jai Maharashtra. Jai Maharashtra sir, और वंदे मातरम, वंदे मातरम. So Darwala sahab, the Prime Minister, Mr. Narendra Modi, goes to Washington DC, and prior to that he goes to the UN headquarters in New York, and the opposition travels to Patna. Sir, I believe the opposition finds objection even to Mr. Modi's American visit. Sir. Yeah, coming to the Honorable Prime Minister's visit to United Nations after the World Yoga Day is a welcome statement, and it's a welcome move to the country which had denied him the visa few years back, as we all know. But uske baad mein what happened as this 22 states that have come together and they are running to Patna, they are running helter-skelter, and as I said, I am hoping and praying that our the beloved and our most respected Sharad Pawar ji takes lead in taking these 22 people under him, because that will be the biggest catastrophe that this India has seen. But I can tell you, Mr. Bajaj and the other gentleman, Advocate Pradeep Nambiar sir. Yes sir. Pradeep sir, that the way the politics in this country is going, it is very, very favorable to the BJP for the ongoing elections and for the 2024, after we finish our 9 years of Modi Sarkar Bemisal. You will see world of changes. Over here I'd like to, today on your show, I'd like to mention about the Pradhan Mantri Awas Yojana. I am telling you, Rajiv sir and Pradeep sir, when I was on the ground, I've met so many people. All have said and they have all confirmed that 2,67,000 rupees that came into the account came like direct benefit transfer. There were no middlemen. At least in Maharashtra, I have come across the figure 8 lakh people have
officially got this money into their account, and they have very diligently and very honestly constructed their houses, and they are living with pride. And the old houses which they had, they have even repaired those houses, and they are living with pride, and they are really grateful to the Honorable Prime Minister. Rajiv sir and Pradeep sir, the Sukanya Yojana, which is not much discussed on your show, is the girls who are wishing to get married, who are looking for loans from this shark money lenders, were tortured, and it was really horrendous what used to happen. Under the Sukanya Yojana, where there was a marriage in the family, with no questions asked, 50,000 through the Bachat Gat to the schemes run by the Honorable Prime Minister, they got, and there were so many people. I'm telling you, there are n number of schemes if we discuss on this schemes that was led by the Prime Minister single-handedly, without any advertisements, without any halla gulla in the newspaper, as we see from Tamil Nadu, from Hyderabad and from Telangana. The newspaper is flooded with ads, but God knows the people over there do not see anything on the ground. But over here, there are not a single ad that a BJP is spending money on, but you can see people who are blessing this gentleman, who is blessing the cabinet, and they all are very happy at the end of the day. And coming back to the joint houses of the parliament, which the Honorable Prime Minister is going to address, as I always said, he is the Prime Minister not of the country, but he is the leader of the nation. As you know, there is a slight discussion where there is actually a rock solid news that our Honorable Prime Minister may be recommended, or is being recommended, for the most honorable post in this country, and the most honorable award, which very few have got, and we will very soon hear about it, Rajiv sir. Right, and could you share with us what that is? I was told, maybe I'm wrong, or maybe it's too early to even, I don't know, I may be wrong at this point of time, where a Nobel Prize is being discussed, oh, where wow. our Prime Minister Amazing, Nobel Peace Prize. Nobel Peace Prize, where our Honorable Prime Minister may be recommended, or I don't know, it's too early, I'm too small a person to be speaking about it, but I wouldn't be surprised, and if it is not, I would take the opportunity on your esteemed channel to propose our Prime Minister for this prestigious peace. Absolutely fantastic. That would be really and truly lovely. But all I'm trying to say is that as far as Mr. Modi is concerned, there is no doubt about what he's done. He's actually managed to achieve macroeconomic stability for the country. If you remember the kind of economic chaos that he had inherited, in 2019 when he came to power, the oil pool account was at its highest. If you remember, the UPA government was giving subsidy after subsidy after subsidy, and as a result of which, what happened was, I believe that the first two interest payments have already been made, and the third one is going to become due sometime at the end of this year, which is going to be huge. We still have to repay all the debts which had been incurred by the UPA government, especially with regard to petrol and diesel, that is with regard to crude oil. And the other thing is the BJP stand on no freebies, irrespective of whatever. Housing is a separate issue, direct benefit transfer is a separate issue, but no freebies at all. Like for example, Pradeep ji, please bear me out, I think on the 23rd, all the traders and all the industry owners in Karnataka are going to go on strike because of the hike in electricity rates. Yes, hike in electricity rates, and second, this is terrible. 10 kg rice is not available. The rice is not available, but then for the rice, Mr. Sitaramaiah says the centre has 5 kgs. The centre has prohibited the Food Corporation of India from supplying the rice to Karnataka, but that's a separate issue. All I'm saying is, at the end of the day, all that you are doing is you're picking Peter's pocket to pay Paul. That's what you're doing, and that I think is a terrible way to run the country, Mr. Daruwala. Yeah, setting the record right, the figures on the petroleum oil pool deficit, since it happens to be my domain, was 13 lakh crores. The government was in a debt, the petroleum ministry was totally bankrupt. The banks that used to lend money to the oil company to get the crude from foreign countries had stopped giving credit. There was no money in the oil company. They were buying at $150 and they were selling at 60 rupees and 40 rupees diesel.
70 rupees per litre was the government that was shelling from its pocket as subsidy. For what? So they wanted to remain in power. When we came into power, when Bharatiya Janata Party came into power, we sold petrol at 120 rupees and diesel at 100 rupees, but we did not break the discipline. And by doing so, what happened today? And I'm proud to say our oil companies have come back into profit. Their Q4 profits have exceeded. The market share of the oil companies have come back into profitability. And now, 2 days back, Honorable Petroleum Minister has requested the oil companies, if they have recovered their losses, if their debts have been paid, there may be a rollback on petrol and diesel. At present, we are selling diesel at 90 rupees and petrol at 100 rupees. Even in the COVID, we did not raise move the prices. That money was used for all the Jan Kalyan Yojana. And very soon, with this discipline Honorable Narendra Modi had put into all of us, we are going to see a breakthrough in the oil industry in coming days. Daruwala Sahab, the BJP says that this is the Amrit Kal. 9 years, bemisal, ye Amrit Kal hai, and the UPA was running the Loot Kal. Loot ho raha tha during the UPA. Now the Congress, Rahul Gandhi today has lashed out on the BJP. He's again told you, where are the jobs? Where are the jobs, Mr. Prime Minister? You said 2 crore jobs. Where are the jobs, 2 crores per year? Then he goes on to name so many companies where the people have lost lakhs of jobs. He says BSNL people have lost jobs, SAIL people have lost job, MTNL people have lost job, ACCL people have lost job, FCI people have lost job. This is what Rahul Gandhi is saying. Employment, health and various other sectors. Now Sawal, Rahul Gandhi, Mallikarjun Kharge, they are saying this has been a total failure. Modi government has been a total failure. How do you say, Darwar? How do you see? This is total nonsense what Rahul ji has said, and what about this people losing jobs. My question is, who in the first place overstaffed these companies? What they need to having 10 people standing at the gate and 20 people standing at the reception? Who gave them this job? Where were this public sector units ever going to come into profit? Who got so many people employed? They were just used to make phone calls, isko kaam pe rakh do, usko kaam pe rakh do, not thinking about the health of the industry, not thinking how this company will sustain. This is what these people did. Now when they are losing their jobs because these public sector units are in loss, these people are crying. They are crying like crocodile tears. But they are not saying why these people are losing jobs, because they cannot sustain. BSNL, who needs 1,000 people, they are overstaffed by 10,000 people. How do you think anybody can sustain? This is the discipline the Honorable Prime Minister has brought. As we discussed in our previous show, where private sector units will be sold to the highest bidder in the most transparent manner, and this public sector units will be run by professional people. You will be surprised, the people who worked as heads and chairmen of the public sector unit were not even from the background. They had no clue, no iota of running that company. Just they were picked up. If they were favorites of this family, they were put, and they had no clue. It's like asking a tailor to run a BSNL company. It was so stupid, but now all this is going to be rectified. Everything is going to fall in line. Like beginning from the banking sector, you will be surprised how this robbers ran away. Who are these robbers? They said they ran away, but in whose time were they given loans? Why do not they clarify all this? What was Honorable ex-finance minister doing? How the phone calls used to go and how they used to avail loans. Now the discipline has come, and it is pinching these people, and only this pain you can see on their faces when they come on national television and just make this baseless accusations on the party who is doing an exceptional job. Right, but Mr. Darwala, which is fine as far as it goes, because logically and otherwise there is no counter to your argument except for the fact that these guys are going to lose jobs. And those people who are going to lose jobs are not going to vote for you. So you have a problem on your hands. Whereas all the decisions that you are taking are economically very sound, as is proven by the fact that today we are a 4 trillion economy. And very soon, within the next 6 to 7 years, we will be the 3rd largest economy, not just the 4th largest economy. Now my point is, how are you going to get those people to vote for you, Mr. Darwala? Exactly. Firstly, Rajiv sir and Pradeep sir, I do not buy this argument that there is no job. This is 2 crore jobs were promised. You can go and check, and you can do a fact finding.
There were 80 lakh people who have already been accommodated, who have been given jobs. The road work that is going on in the nation has employed, absorbed the numbers which are not there with the media or the people who have been absorbed in this job, in the airports, the development work that is going on, the ports that are being built. These people who did not have jobs, we are not finding, the fact is in cities you are not finding laborers. If there is no job, why are these construction companies crying that we do not get labor? If there is not labor, where have they gone? 110%, and precisely they are working somewhere. They are working in the government sector where the development work, the flagship projects are going on. There are no people available. There are no painters available. There are no masons available. Where have all these people disappeared? If there are no jobs, you would go to the Monday and you would see people sitting in the morning and you could bring them at mere 40 rupees and 60 rupees. Nowadays, nobody is working below 700 and 800 rupees because in the flagship programs, each and every one has been absorbed. 80 lakh people have officially been given job. In Maharashtra, Honorable Chief Minister Shinde Saab did a function in Thane where there was jobs given. There were no takers for these jobs. This is a fact and this can be reported on your prestigious channel. But Mr. Darwala, the other thing also is that in terms of the Congress propaganda or Congress campaign on, and not just the Congress, the entire opposition campaign on price rise, unemployment, rise in law and order problems, rise in crime against women and Dalits. And by the way, in terms of the figures that Mr. Mallikarjun Kharge provided, as Pradeep ji is so fond of saying again and again, these figures are from the National Crime Research Bureau of the Ministry of Home Affairs, that there has been a 29% increase in crimes against women and crimes against Dalits and Adivasis in these last 9 years. Now, how are you going to combat that? Because that seems to be gaining ground. Mr. Darwala. Pradeep ji, I cannot give you a logical answer to this because I had a small, on a lighter note, is when the Congress was in power, everybody was khushhali, there were jobs for everybody, yes. Prices was at all-time low. Rivers of milk and everything, honey. Everything was like, so nice and yes. come on, this is a stupid thing. It is the job of the office. And all of us were driving Bentleys and Rolls Royces. Yes. 110%. This is that, the Sadawa in that mind, this Jati and all this caste creed is what the Congress venom has always been spelled out. Now, this is the job of the opposition. They will cry foul, like, there is no job, there is a petrol all-time high, and there's inflation, and there is Mehengai. Mehengai kam nahi thi. You tell me when, at the time of Congress, were you getting rice free? Was petrol been given as subsidy? What nonsense are they talking? It has been controlled. It is what the amount that we are paying today for the mistakes this government made in the previous time. But I can assure you the 9 years, completion of 10 years, the Amrit Kal is on its way. It is going to come. Honorable Prime Minister does not give false promises, and I can stand witness to this. You will see windfall change in this country. Give some time. This is the problem what has happened with everybody. Their expectations with BJP and with Honorable Prime Minister is so high that they expect that India will be a superpower, where they were said that it's a third world country and it is going to crumbling down. This is the expectation that of the people have risen with this Prime Minister and this government working at this time. Yes, I know this thing has to come. Prices should be down, things should be cheaper, but it will take some time. But I can assure you on your channel, it will come down. Give us a little time and we will see. I do not want to compare. I will not say that in Pakistan it is for 200 rupees. So we are selling at 100. So I'm not going to pat my back. I don't think we should. Sir, I don't think we should compare ourselves to Pakistan. I mean, come on. Exactly, exactly. What is happening in the European Union? We know yes. it is sad, and I do not want to compare and pat our back. We can, but I we feel can that compare there should be ourselves happiness all to over the UK. the world, and the Honorable Prime Minister should lead from the front. And the Prime Minister, Pradeep, you can come in on this. Please, the Prime Minister is going to be meeting all heads of industry and business in the United States. We're going to get, hopefully we'll get a huge amount of investment from there. There's a huge GE deal, General Electric deal, which is just due to be signed. I think it will be signed very, very shortly. And we are buying about $80 billion worth of defense equipment. Even a private carrier like Indigo is buying so many hundreds of aircrafts from 500. Yes, 500. Bilkul.
500, exactly 500. Yes, absolutely. So effectively, And the most important thing is tomorrow the Prime Minister is going to lead, the whole world is going to see him perform. The yoga, International Yoga Day, the whole world is going to celebrate yoga, and you got Prime Minister out there in the center of the entire exhibition of yoga, India. It will do India absolutely proud, Mr. Daruwala. It's fantastic. fabulous. One feels proud to be an Indian. Pradeepji, let me tell you something, earth-shattering incident that is happening in Pune today in next 20 minutes. It is called the G20 summit. The 32 heads of the country are in Pune, and there is an exhibition of all the education hubs, all the universities, all the top schools and colleges. They have put up their stalls, and it has been visited by 32 countries. There was a time when Indian students went out, they were bleeding and paying from their nose for their education. Now the time has come when people from around the world will be coming to India, and this showcase is being done in Pune at this point in time as we are talking. 32 country heads are visiting the stalls and are looking at the options where the students can come in India and study. Likewise, how we used to think when we were in college that we can go to abroad, like go to Harvard or Oxford or Cambridge and study. It's the other way around. We got people from European nation, from the United States, from Australia wanting to come, and in next 6 hours you will see a record break admissions that will be taken in India by foreign students. This is only possible with the vision of Honorable Prime Minister. Under the G20, we have the Universities 20 meet that is happening, and it is an overwhelming response. All colleges, all top universities have put up their stalls, and they have run out of forms. All their forms have been sold out, and we'll be seeing an influx of foreign students in India in coming days. And the other thing which has happened, which is kind of fantastic, is that from Calcutta to Bangkok, you can now travel by road. In another 3 years, that super highway will be ready, which is fantastic, isn't it? From Delhi to Lucknow to Calcutta to Dhaka to Rangoon, and from Rangoon straight to Bangkok. It's a super highway. It's going to be ready in the next 4 years. Actually, it's going to be ready in the next 2.5 years. The entire thing, the 8-lane on both sides, that is 16-lane super highway, is going to be ready in the next 4.5 years, which is fantastic, absolutely lovely. Nobody ever thought of that. I mean, that's part of the Prime Minister, Mr. Narendra Modi's Look East policy, which is coming to fruition now. And I thought, very frankly, till I read the news this morning, I thought that everybody had forgotten about the super highway project, but apparently no. All the problems that were encountered in the Myanmar sector have actually been overcome, and work is going on at full swing over there. Fantastic. So congratulations, Mr. Daruwala. Mr. Daruwala, you got a problem here in Maharashtra, Mumbai, where Uddhav Thackeray, you accused the BJP Eknath Shinde government formed an SIT to investigate charges of corruption, thousands of crores, CAG report, the BMC, and Uddhav Thackeray in return says there is 650 crores mismanagement by Eknath Shinde, Dev Fadnavis government, where the BMC's Dev Fadnavis government stippled with corruption. This is BMC, everything that the BMC controlled by Eknath Shinde is totally out of corruption. Cement, concretization road, various contracts, no responsibility, no accountability. How do you see Uddhav Thackeray's reaction to your SIT charges, Mr. Daruwala? Pradeepji, answering to this stupid move of Uddhavji is really stylish. If he has anything to say, and if he feels that there has been corruption, there is a forum. If he has facts and figures and documents in his hand, he should approach the CBI, he should approach the enforcement director and give it over there. And then from there you will see what happens. If it is there, it is proven. I've told you time and again, even if it is BJP, it can be any big names that you have taken. If they have done corruption, action will be taken. Nobody will be spared. Over here, nobody is above law and nobody is above board. If he has facts and figures, he should approach the appropriate forum. If it's an ED government is what he feels, that he is free to go and lodge a complaint. And I can assure you, there is this media, there is your channel, there are everybody over there who will take appropriate action. And there is no point screaming. Take action. If there is something that's happening, take action. I'm telling openly on your channel. Now over here, Mr. Daruwala, just to bring you back, the fact is that out of the 25 years that the BJP, the Congress, or rather the Shiv Sena has been in power in the BMC,
Have we got Mr. Daruwala with us? Right, we have him. Yes, at that. Yes. So all I'm saying is, out of these 25 years of the Shiv Sena, almost 20 years the BJP has been a partner with the Shiv Sena. And the BJP had promised, Mr. Fadnavis had promised a full-scale inquiry into all the deals of the last 10 years of the Shiv Sena. Any knowledge, sir? Any information on what has happened to that inquiry? Firstly, I would not like to say anything about our ex-partner Uddhav Thackeray ji, because he has been misguided. He's been misguided so badly, but you will be surprised that the day when he realizes that he was misguided, and when he realizes that everything is not hunky-dory as I would not take the names of the people who were responsible of doing this, when he realizes, you will be surprised to say that Uddhav ji is back with the BJP Shiv Sena alliance. So Wow. it's very inappropriate. It's very inappropriate of me to pass any comment. He's very senior. He's a very remarkable. He's a very big leader. But let's wait and watch. For every statement Mr. that Daruwala, Uddhav ji makes. Mr. Daruwala, do you see something moving this particular way that you're talking about? Is he finding out that things are going wrong? Because Sanjay Raut, in the day before yesterday, the Shibir of Uddhav Sena told that in MVA, everybody is being declared as a future chief minister. In NCP, in the Congress, everywhere. He says there's no discipline. That is what Sanjay Raut said. And Sanjay Raut told when Uddhav Thackeray was there, out there in the munch, he's on the stage, he said, the MVA, we will be with the MVA till Mr. Uddhav Thackeray decides that we're going to be with the MVA. And the day he decides we are not. So how do you see that? Are they realizing that the mistake has been done, that we can't leave the core issues of which we were together with BJP? Are they realizing it now, as you said? And if they realize it, do you think the BJP will accept them back with open arms? Too small a person to answer such a big question, but the spirit with what BJP and Shiv Sena fought the election, we got our votes together. But I am again, time and again repeating, and I am with very guarded words, the day Honorable Uddhav ji realizes that he was misguided by the elements, who used him as a shield to cover their nefarious things that they had done. Uddhav ji that day is not far away when Honorable Uddhav Thackeray will realize, and he will come, and our Prime Minister, our Honorable Amit Shah ji, Devendra ji, Eknath Shinde ji will accept him with open arms, because he is none other than us. He is part of our Vichardhara, and over here Vichardhara is above party politics and election. That is what I'd like to rephrase my words. I'd say Uddhav ji is part of us. It's just that he has been misguided. The day he realizes, with my guarded words I'm saying, he will come back to the Vichardhara that we have worked together. But seems like it, considering the kind of tensions which are prevailing in the MVA right now, there's every possibility that in politics one never knows. Anything can happen. Really and truly anything can happen. But in terms of the Uniform Civil Code, sir, now, from whatever we have heard, there is a possibility that within the next 3 months, the main structure for the Uniform Civil Code will be ready, and that the draft resolution may actually be sent to the parliamentary subcommittee of the Ministry of Legal Affairs. There is a possibility. So, anything on that, Mr. Daruwala? Yeah, Pradeep ji and Rajiv ji, this small foot soldier is part of drafting of this thing in our honorable office, where I was for a very short time part of it. It is ready. Now we are not going to come up and we are not going to thopo it on people. We are going to outreach to the people. We will convince all communities, especially the minorities, that under the Uniform Civil Code, nobody is going to be hampered. Nobody's rights are going to be taken away. In fact, they will be given more rights as per the Constitution, and they will get a place. The ladies will get their voice, and there will be fairness on the Constitution which our Honorable Baba Sahib Ambedkar had written. And this is what was going to come. This thing was written years back, but it was never implemented because there was no Ichha Shakti. Only with the steel fist of the BJP, all these things can be implemented. It is not only Uniform Civil Code, it is the new education policy too, which is going to be implemented. These two are the last bills, which are the Sapna
the dream of the BJP, and we will do it. And as you say, the Ram Mandir, the 35A, the abrogation of 370, yes. And the farmers bill. The farmers bill was such a farce. After it was drawn back, this hyenas sitting in the chair, they came back and then they said, oh, it was a good bill. Now come on, our Prime Minister has come and he said on the national television and he's done what he had to do. But I can assure you all these 5 bills that he worked on were in the favor and they were in the janhit of the people. And I can assure you, believe me, Pradeep ji and Rajiv sir, it is going to come and it is going to come and it's going to be benefited, and you will hear from the people. On this same show, we will be talking once again. That'll be lovely. But the only premature. thing is, Mr. Daruwala, to talk, yeah. Yes, the only problem over here is, unlike Article 370 and 35A, and the Ram Mandir, of course, and of course, banning of verbal triple talaq, as opposed to triple talaq, verbal triple talaq is what has been banned, and which, by the way, was the need of the hour. You know it, I know it, everybody knows it. Nowhere in the world except India it was there. Nowhere in the world. I agree with you. You know, women getting thrown out only on the basis of what? SMS? WhatsApp? Just a phone call? I mean, it is the worst thing that can happen to anyone. Very rude. It's very rude. I'm a Muslim. I know what used to happen. People used to approach me, and that high-handedness of the men. I'm telling you on your show, I told you, in the Muslim population, as Pradeep ji had mentioned, that the 14% Muslim votes are going. No, I said, I was the only guy in this country who said, no, Muslim votes are not going. In fact, they are coming. The 4% Muslim votes we got were only the women vote that we got. And this number is going to increase. With Uniform Civil Code, Muslims will have more strength and teeth than previous time. Assure you. Over here, Mr. Daruwala, my question was that in all these things, you had a ready-made acceptance among people which was already there. Now, in terms of the farm laws and in terms of, with reference to the Uniform Civil Code, your communication skills are really going to be tested again. Because where did you fail as far as the farm laws are concerned? The central government was not able to communicate what it really meant to do properly. Otherwise, it would not have resulted in the loss of about 700 lives over a year. Mr. Daruwala. Very unfortunate. Once again, my condolences to the 700 lives. But what came out, what surfaced was this Andolan Jeevis who surfaced, and their job was only to protest for the reason of protesting. And it was proven in the due course of time what they did was wrong and the farm law was good in nature. But how they use it to their benefit, how in Punjab they came to power, these were the same faces that surfaced once again. They were the same faces who were accused and where the funding was coming, and everything was proven. But the stupid people sitting in the benches where they are sitting, they did not have the courage to do it. I'm very controlling my words over here. This is a systematic undercurrent that is trying to pull down the country. It is the people whose comfort zones have been shaken. They are not getting their freebies, they are not getting their wine and whiskey bottles, their free flights, their free foreign trips have been stopped. It is this handful of people who are working with having some news channels in their hand, but believe me, in the long run, people will realize Uniform Civil Code will come. Now, as I told you, before implementing it, we will reach to the people, we will make them understand, and with their consensus and with their affection and happiness, we will implement this bill. Because they will see it is the job of our spokesperson, of our foot soldiers, to communicate to people. And no soon in this year, before we go in for election, all the bills that were given to the party by our think tank will all be implemented. And I would not be surprised even if this farm law, what was there, if it comes back and by the public demand they will say, yes, Honorable Prime Minister, we would like to have this law. Anyway, Mr. Daruwala, the only thing is that at the moment the Congress seems to be on the ascendancy, especially after the Karnataka result. 135 seats is not a joke, that's fantastic. The BJP stopped just at about 65. Now the difference of 70 seats, that's huge. Now that has emboldened the Congress, and today the Congress feels that they can replicate the Karnataka template in Madhya Pradesh, in Chhattisgarh, in Rajasthan, and their own surveys say that they're winning. They're winning in all these 3 states.
Mr. Darwala? Rajiv sir, there is an organization which has been formed in the Supreme Court, which is called the Taxpayers Organization. This freebies, this money they are giving away is the money, the tax paid by you, me, Pradeep ji, and the people who are paying taxes. We are here to decide. If any political party comes and gives free soaps without any proper backup, it will be stopped and election commission But do you will think come that in. it does? Because the This Supreme cannot Court has happen. no I diagnosis. don't think, and I'm sure it will come and a law will be passed. I don't This think so. freebies without a think Sir, tank I will don't think not the come. Supreme Court, I don't think this falls within the jurisdiction of the Supreme Court, because this is part of democracy. Any party can promise anything that they want. Darwala Let's be sahab, very even clear. So, what Bhajan hang sahab on a is saying, minute, yes, Pradeep yes. ji, one second. Now the point is, a party's manifesto is a party's property. I don't think the Supreme Court would interfere in that at all. Let's be very clear, but that's a separate issue. All I am trying to say is, how is the BJP going to combat this? Forget about the Supreme Court. Let's talk about the BJP. The work that you have done is more than impressive. That should be enough to combat whatever I it did is say- that the Congress can offer. Sir, Exactly, Rajiv sir. With full authority and with full confidence, I'm telling you, we are not going to roll out freebies, as I said in my previous interview. We will come with the flagship programs that we did and the benefits that we have transferred to people. And on the basis of our good work, Pradeep ji and Rajiv ji will go in for the Lok Sabha election. And I'm sure with this world opinion about our Prime Minister and the ground, the success on the ground, we will come back to power and we will come back, as I said, not 300 but 500 plus. Darwala sahab, you are saying freebies, but do you think this 80 crore logo ko ration dena is not freebies? I mean, you are doing a good job. It's required for the poor and downtrodden. I agree. But they are I freebies. 80 crore logo ko free muft mein khana dena, 3 Yes. crore logo ko I ghar agree. dena, gas, toilets 11 crore logo ko toilets dena, Ayushman 2 crore, Nal se Jal 12 crore houses. Now how do you call it? Is it freebies or it is social justice or Jan Kalyan Yojana? How do you call it? Define. Correct. This is also part Correct. of freebies only. Correct. The funding for this was done with the systematic way. Giving water to the people is necessity. Giving it free is not a necessity. Giving people gas where they were using firewood was a necessity, and it was the money that the government paid on the first instance, till they got used to it. The second thing, as you said, giving them house is a necessity. It is not a luxury. Giving them free bus ride is not a necessity, it is luxury. If you can just differentiate between the things that the BJP is given, was it necessity or was it luxury? You will come to know, your answer will be answered yourself, your question will be answered. Back to 80 lakh people giving ration is so fair, is so fair. In COVID, there was no food. People did not, there were no shops. It was through this PBS system the government reached out to the poor. You would be surprised, like people from big houses, there were people from the big houses, they were not getting food in their houses to eat. The Prime Minister, through their party and through the government, we reached out to people and we gave them food, we gave them ration. And not even the government, we had big houses, big companies, like people like you and me had whatever means we were going and giving, we were helping people. Like you can understand, in 100 years, nobody has seen this kind of a situation. In COVID, yes, we did give and people have appreciated. And you have they not continued only that appreciated, scheme they have even blessed now. people. Yes, you we have have continued that even now. Yes, because it's just hardly 1 year since the lockdowns have shut down. Yes. People have not come back on their feet. It was once in a lifetime thing which we had never seen. Do you think, Pradeep ji and Rajiv ji, we did a wrong thing? I would like to ask you, though it's not my No, duty to ask you a I am question. totally for a welfare state, sir. I am very old fashioned. I am totally for a welfare state. 110%, As long as you are helping the poor, as long as you are helping the people below the Exactly. poverty line. About the toilet, That's it. our ladies were going in the farmhouses. Yeah, but then Do you that's think a it was long a discussion. necessity or was it a luxury? Darwala Shauchalaya sahab, was Darwala basic sahab, thing. that's a He long said, I'm a discussion. small man and I will do small things and I get happiness out of small things. That's a long discussion, sir, especially with the toilets are concerned. We should have come out with a new innovative solution instead of just having a water closet kind of a toilet everywhere where so much of water was required. Rightfully speaking, as the IIT engineers had suggested even at that time, you should come out either with a chemical toilet or with some other kind of toilet so that it could be used and it could be permanently used. But then that's a discussion for a different day. But thank you very much, sir. And once again,
It's really lovely to see the Prime Minister in the United States, the US falling all over itself, not just to lay out the red carpet for the Indian Prime Minister. I think the government of the United States of America has violated its own protocols, forgotten about its own protocols to welcome Mr. Narendra Modi the way they are doing it, which is absolutely fantastic, and it should be a matter of pride for every Indian. Mr. Daruwala, thank you very much for talking to us. Great pleasure. Thank you, Rajiv sir. Thank you, Pradeep sir. I hope Thanks. I've been answering your questions. Fantastic. You've been doing fantastic. You're doing a lovely job. You're doing a wonderful job, Daruwala sahab. Today your facts and figures are amazing. And I hope, Thank you. I hope whenever you come to BKC, you'll join us for a cup of coffee or tea, whatever it is that you prefer, at our office, and we can have this discussion in our studio. Thank you very much, sir. Namaskar, sir. Vande Mataram. Bye. Jai Hind, Jai Maharashtra, Jai Bhavani, Jai Shivaji. Right, that was Mr. Daruwala, and we apologized for the low audio of Mr. Daruwala. I wonder why the audio was so low. Anyway, at the moment with us to talk about a subject which is really depressing but absolutely necessary, our old friend Mr. Nandakumar Pawar, environmentalist, one of the most courageous people we have known. Nandakumar Pawar साहब, नमस्कार. नमस्कार सर, लेकिन मैं आपको दिख रहा हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल दिख रहे हैं सर, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे कान में. बाहर से आ रही है, स्टूडियो के बाहर से आपकी आवाज आ रही है, मेरे कान में आपकी आवाज नहीं आ रही. क्यों नहीं आ रही मुझे मालूम नहीं है. I think I'll request our sound guy to just solve the problem. आपको मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है. Right. I still can't get Mr. Daruwala in my Mr. Nandakumar Pawar in my earpiece. I don't know why. There seems to be something wrong over here. Will somebody check on that, please? Hello. Pradeep ji, I can hear you. I can hear you. please go ahead, sir. Why don't you go ahead, sir? पवार साहब ये we are concerned continuously जिस प्रकार से solid waste management मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और महाराष्ट्र में होना चाहिए. The government doesn't seem to be totally ठीक है, lip service दे रहे हैं. देव फडणवीस जी बोल रहे हैं कि we need to talk about this, we need to talk about the rivers, we need to talk about garbage, we need to talk. Prime Minister Modi talking in all climate change, हर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में वो हर चीज में, और छोटे छोटे घरों तक वो एड्रेस कर रहे हैं कि आपको सोचना पड़ेगा. बट आज भी mangroves are being invaded by garbage, the sea, the rivers are totally flooded with pollution, oceans are full with pollution. What is that? You have been soul fighter. आप जैसे बहुत कम लोग हैं जो environment के लिए, but environment आज के तारीख में एक बहुत बड़ा मुद्दा है which people are not realizing. पवार साहब, the government has to do something very frantically, desperately. एग्जैक्टली सर. बेसिकली मैं दो मुद्दों पे बात करना चाहूँगा. सर आवाज़ आ रही है मेरी? I can hear you, but Mr. बिराज साहब can't hear you. वो rectify हो जाएगा थोड़ी देर में. हेलो. बोलिए सुन रहे हैं. सर दो मुद्दों पे मैं बात करना चाहूँगा. एक पहली बात तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि शहरों में जो कचरा जमा होता है वो कचरा आखिर जाता कहाँ है? क्योंकि ईस्टर्न सबब में आप देखोगे मुलुंड से लेके विक्रोली तक जो ओपन ड्रेन है, जो जहाँ से कचरा निरंतर मैंग्रोव में बहता रहता है, तो हमने ये पहल की थी कि ये कचरा मैंग्रोव में जाने से पहले ही उसको ट्रैप किया जाए. इसके लिए हमने जाली बिठाई थी. बोलिए हाँ. यस हाँ, हमने जाली बिठाई थी. ओके. और हमने 2 महीने लगातार उसको मॉनिटर किया और लगातार उसकी साफ सफाई की. तो हमने ये पाया कि एक जाली में से लगभग 250 से 300 किलोग्राम इतना डेली बेसिस पे सॉलिड वेस्ट जमा होता है. प्लास्टिक वेस्ट या फिर फ्लोटिंग ट्रैश, नॉन बायोडिग्रेडेबल ट्रैश, ये जमा करना ज़रूरी है. क्योंकि आखिर में वो जाता कहाँ है? तो जाता है मैंग्रोव में. और हम सब जानते हैं कि थाने क्रीक is a flamingo sanctuary, and on the top of that it's become Ramsar site. So we must feel very proud of that. लेकिन हम उसको उसकी रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए क्या कर रहे हैं, ये सबसे सोचने वाली बात है. हम एक कंसर्न सिटीजन है. हम चाहते हैं कि थाने क्रीक क्लीन हो, जाके बायोडाइवर्सिटी बरकरार रहे, बड़े टूरिस्ट आए उसका आनंद ले. लेकिन सरकार क्या करी? अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट का जो जमावड़ा दिख रहा है आपको नाले में, ये एक आउटलेट है जहाँ से सिटी में से
कचरा सीधा मैंग्रोव में चला जाता है और ये हम लगातार साफ कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि टन्स ऑफ गार्बेज आर डिपॉजिटेड इनटू द चैनल। Yes, yes, yes. और सबसे कंसर्न की बात है, सबसे चिंता की बात ये है कि वी आर इन द मानसून। हालांकि मानसून में बारिश नहीं गिर रहा है, वो अलग कारण है, वो अलग बात है, आई टॉक सेपरेटली ऑन दैट। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? वी आर मुंबईकर, व्हाट वी आर डूइंग अबाउट इट। मुंबई में तो हम सब जानते हैं कि मुंबई में वाटर लॉगिंग होता है, फ्लडिंग होता है। ये क्यों होता है बेसिकली? और बीएमसी और जो भी कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहे हैं इसके बारे में? हम तो जानते हैं कि 60-70 मिलीमीटर अगर बारिश होता है तो मुंबई गेट कंप्लीटली स्टैंड स्टिल, देयर इज नो वे आउट। और हम तो भगवान के भरोसे पे रहते हैं पूरी तरह से, क्योंकि हमारा स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन इतना लिमिटेड है कि इतना हेवी 60-70 मिलीमीटर बारिश अगर एक घंटे में हो जाए तो उतना वाटर कैरिंग कैपेसिटी है ना ड्रेनेज सिस्टम का। तो हम भगवान भरोसे पे इसलिए रहते हैं कि कब लो टाइड आवे, लो टाइड में पानी अंदर चला जाता है ऑटोमेटिकली। जब हाई टाइड आता है तो पानी पुश होता है शहर की तरफ। तो हम ये सिस्टम पूरा भगवान के भरोसे पे है। और ये जो नाला है, ऐसे कई नाले हैं, ये एग्जांपल आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ये नाला पूरी तरह से भरा हुआ है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं कि नाले की स्टेटस क्या है, पूरी तरह से भरा हुआ है। और आगे चल के पूरा इसमें घास जमा हुआ है। तो घास क्यों जमा हुआ है? क्योंकि पानी रुका हुआ है कचरे की वजह से, और उसमें घास पनपी है और वो घास ने और कचरे ने मिलके पानी का बहाव पूरी तरह से रोक दिया है। तो पानी शहर से निकलेगा कैसे? इसके लिए कोई साइंटिस्ट की जरूरत नहीं है, ये नाले साफ होने चाहिए पर हुए नहीं। ये कल परसों की बात है। तो बीएमसी क्या कर रही है? ये काम केवल हमारा है क्या? What BMC is doing all about it? तो We have all the resources, they have financial backup, they have manpower, and what we are doing with very limited manpower, we are spending our own money for this. What BMC is doing about it? तो मैंने इसके बारे में उनको कंप्लेंट किया था 1-1.5 महीना पहले कि what is your role in this? You should come up to rescue us. इनफैक्ट हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है या तुम्हारी भी नहीं है, ये कंबाइंड जिम्मेदारी है, सिटीजन्स की भी है, प्रशासन की भी है। दोनों साथ मिलकर अगर काम करें तो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कई हद तक सॉल्यूशन निकल सकता है। लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आता नहीं और हम निरंतर ये काम करते जाते हैं। पवार साहब आप मुंबई के बारे में बात कर रहा था। मुंबई में बीच में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आया था, ही हैड कम एंड 7 एसटीपी प्लान्स। आज भी उद्धव ठाकरे जी बोले डिसैलिनेशन प्लांट हमारे सरकार एमवीए सरकार के टाइम पे घोषणा हुआ था, वो अभी भी काम चालू है। तो ये एसटीपी वगैरह हाउ इज गोइंग टू चेंज इट? ये मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट कर पाएंगे? ट्रीटेड चीज जिस प्रकार से जाएंगे, हाउ आर द एसटीपीज एंड हाउ थिंग्स आर गोइंग टू चेंज the way you're talking about solid waste management में ये 7 STPs किस प्रकार से एक सुधार लेके आएगा? It will help save the environment when Mumbai, Thane, Navi Mumbai is concerned. कैसे देखते हो पवार साहब? सर कई जगह पे जो कॉरपोरेशन है, जैसे कि उल्लासनगर है, अंबानाथ है, बदलापुर, कल्याण है, और कई इलाकों में ये पाया गया कि एसटीपी जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो काफ़ी हद तक कम है। कई बार ये देखा गया कि सीवेज का पानी अनट्रीटेड सीधा नाले के जरिए खाड़ी में बहाया जाता है, जिससे बायोडायवर्सिटी को गंभीर खतरा पैदा होता है। सरकार की ये पहल जरूर है पर वो नाकाफी है। लेकिन नंदकुमार पवार साहब, कैन यू हियर मी सर? पवार साहब, कैन यू हियर मी? या आई कैन। ओके, नाउ व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट? क्या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से सॉलिड वेस्ट जो है, डज दैट आल्सो गेट ट्रीटेड, और आर वी ओनली लुकिंग एट लिक्विड वेस्ट दैट इज देयर इन द वाटर? So that is only talking about the liquid waste. Solid waste is complete different issue altogether. So which means goes to dumping ground. So which means the STP, that is the sewage treatment plant, will only be dealing with the allegedly toxic materials which are already dissolved in water. Now, is that only a filtration process, or will that also
purify the chemical toxicity of the water before it releases it into the sea or into the river or wherever? Nand Kumar Pawar sir. Yeah, it is supposed to be cleaning process, purifying process, or removing all toxic in the water before releasing them into the creek. But what I have found, it's very shocking. At the Bhandup, we have STP, Yes. and the water which released into the creek found to be highly contaminated. How is that possible? Yeah, I have checked. So which I have means checked either some the samples. STP is not working or the STP capacity is not enough to purify the water which is going through it to be treated, right? There is no absolute control on what actual treatment is being done. The treatment is being done just for to show some treatment is being done there. But when I took the sample at the point where the treated water is being released into the creek, the water found to be highly contaminated. Even the BOD should treated not- water was found to be contaminated. Now this is very very important. This is Sewage treatment plant से भांडुप में जो पानी treatment के बाहर STP के बाहर जो पानी आ रहा है, which is supposed to have been treated, that itself was found to be highly toxic. ये मतलब ये सर ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है अगर देखें तो नंद कुमार पवार साहब. Yeah, the BOD should not exceed 30 milligram per liter. The BOD found to be 87 milligram per liter. 87. The TDS, that is total dissolved solid, should be ranges between 2 to 5,000. It has been found to be 24,000. What we are doing about it? And we have proof, we have documentary evidences. With the water sample being tested in the reputed lab. So sir, is the STP not working? Or is the STP not capable of treating that kind of water? There is no serious treatment is being done at all. The treatment is being done to show some treatment is happening here, but not detailed or scientific treatment is being done. That's my own experience. Pawar sir, what do you do? Now you have said that you have taken samples, आपने samples निकला, you found it is totally contaminated, you said the solid presence is high. Now you must have complained to somebody. What is the remedial measure here? If the STP is not functioned to its full value, then what is the remedial measure? क्या होना चाहिए? STP because government. ये रिपोर्ट जब न्यूज चैनल में आया, न्यूज पेपर में आया कि the water is highly contaminated. The next day, some guys from the MPCB, they took some samples into the Thane Creek itself in the clear area, and they have proved the water is clear. Then I challenge them, you come with us and I will tell you from which point you should collect the sample. But they didn't respond. And the Thane Creek, supposed to be the Flamingo Sanctuary, it's under mangrove cell. And very shockingly, mangrove cell has not been bothered to take water sample so far. What is the contamination, what is the quality of water that exists in Thane Creek as of now? There is no any record of any sample being tested by the mangrove cell government of Maharashtra. So sir, this is a very dangerous thing because Yes. we were told that the 7 new STP plants which have been ordered will effectively solve the problem of ocean pollution, river pollution, etc. of Mumbai. Now, if the sewage treatment plant at Bhandup is actually releasing contaminated water, what happens to the rest of Bombay when all these new STP plants are ordered, set up and they start functioning? Mr. Pawar. Here, the Thane Creek, you see, because of the dumping ground set up on the coast of Thane Creek, the entire Thane Creek has been contaminated beyond imagination. And as mentioned by the PM that STP will be fully functional, but that's remain only on the paper. When it will be actually functioning, God knows. Till then, water keeps releasing into the creek area. And poisoning the entire surrounding and everything else because it's actually Yeah. poison which is being released, isn't it? Yeah, and we are the fishing community have to pay heavy price for this because we are not getting any fish in the Thane Creek. Supposed to be fertile fishing area, but there are so many villages on the bank of the Thane Creek.
they are completely deprived because of the pollution in the Thane Creek. Power Sahab, how do you handle it? Now you're saying Thane Creek is a Ramsar site, it's a Flamingo site. You got a mangrove cell that has to look into all these kinds of anomalies, जो भी disturbances होता है for this particular creek. The mangrove cell is not doing the job. The MPCB is not doing their job. What do? We have got an environment minister also. I mean, is he doing something? Because this is a very, very serious Flamingo site, Ramsar site, or isko koi, nobody is really taking. It is few environmentalists like you who are raising issues, and the MPCB comes and collects sample from some other place, rather from the STP which you want to say. Now, where is the solution? It's a very dangerous and very, very desperate issue. Thane Creek, Flamingos, environment, ecological fragile. What is the solution, Power Sahab? What do you think the environment minister, the CM, deputy CM should directly intervene and do something where environment is concerned? Exactly, they should be directly intervene into this serious matter. लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं. Nobody bothers about what's happening. अभी last time जो program हुआ था, उसमें हमारे PM proposed to come to PPA, that is onto pumping station and at Thane Creek. लेकिन उनके माध्यम से ये प्रस्ताव किया गया था कि they go for mangrove plantation. तो ये प्लांटेशन और मियावाकी को जो बढ़ावा दिया जा रहा है आजकल, वो पूरी तरह से गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि मियावाकी दे कैन नेवर रिप्लेस एक्चुअल जंगल. Yes. Because the quality and the quantity of services, the amount of services which provided by the actual natural jungle, they cannot be compensated by Miyawaki. For time being, the area can be turned into green spaces, no doubt about that. लेकिन हम 100 साल पुराने पेड़ काटने का इजाज़त देते हैं, मैंग्रोव को काटने का इजाज़त देते हैं, और उसका नतीजा क्या है? अभी बारिश का मौसम है, जून इज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है, अभी देयर इज नो साइन ऑफ एनी रेन. तो इसके बारे में हम गंभीरता से क्यों नहीं सोच रहे? अगर ऐसा ही कुछ दिन रहा तो पानी पीने के लिए पानी मिलेगा हमको? अभी आलम ये है कि कई डैम पूरे ड्राई हो चुके हैं और अभी भी पीने का पानी का राशनिंग चालू हो गया है. तो हम नेचर को इतना लाइटली कैसे ले सकते? किस विकास की हम बात कर रहे हैं? विकास का मतलब क्या है? नेचर को खत्म करना, पर्यावरण को खत्म करना, ग्रासलैंड को खत्म करना, मैंग्रोव को खत्म करना, उसके ऊपर मिट्टी डालना, कंक्रीट जंगल बनाना, ये विकास है? रीडेवलपमेंट के नाम से हम अलग अलग प्रोजेक्ट को एक से पैसा देके बिल्डिंगें खड़ी करते, टावर खड़े करते, लेकिन उनका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, सुवेज ट्रीटमेंट, ये समस्या के बारे में कौन सोचेगा? अभी मुंबई के बारे में अगर हम सोचेंगे तो मुंबई इज ऑलरेडी हेवीली पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट पॉपुलस सिटी इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ ऑटोमोबाइल व्हीकल इन द वर्ल्ड. And see the heat, it's beyond 55 degrees. Yes. जिस विकास की हम बात कर रहे हैं. Yes. Power Sahab, we are concerned like you are, like all the environmentalists, just because solid waste management, garbage disposal is concerned, इसका कोई scientific solution जिस प्रकार से आज भी वो एक पुराना तरीका है कि यहाँ पर लेके आओ और कंजरबाग वगैरह डंपिंग ग्राउंड्स में आप डंप कर दो. Now, as an environmentalist, what do you see? Because we were talking to some other day, they said if a government want to stop this entire thing, also it take another 5 years to make that area back to its the way it was, fertility. So हम जितने खराब हो गया उसको भी redeem करने के लिए 5 साल लगता है. Now if the government starts from today where solid management is concerned, it take another 5 years to get the environment and ecology back to its normal. So what do you see as solution? Because you have also filed petition in the High Court and Supreme Court. What is the solution? Immediate solution क्या है solid waste management के लिए? वही चल रहा है कि debris उठा के mangroves में डाल दो और वो खत्म कर दो mangroves को, फिर construction site बना दो. When is it all going to change? I mean, क्या दिख रहा है? It's a very dangerous and very onerous the way things are right now. Power Sahab, what is the immediate solution where solid waste management, garbage disposal are concerned?
सर एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार या फिर सरकार का अप्रोच इस तरह का है कि हमें जब प्यास लगती है ना तब हम कुआं खोदते हैं, पहले से कोई बात का प्रोविजन नहीं होता है। अभी कांजूर में जो डंपिंग ग्राउंड बना है, जो चिंचोली गांव बंदर और अ, अ, उसके आगे का जो डंपिंग ग्राउंड था, उनका कैपेसिटी खत्म होने के बाद उन्होंने ये प्रपोज किया कि कांजूर में डंपिंग ग्राउंड हो। वो भी सरकार ने या एमसीजीएम ने आधा सच बताया सुप्रीम कोर्ट को कि कांजूर इज अ प्रॉपर प्लेस, सुटेबल प्लेस फॉर डंपिंग ग्राउंड। हालांकि पूरी जगह शेयरजेट 1A एरिया है, मैंग्रोव से घिरा हुआ एरिया है, मछुआरों की जगह है, जहाँ पे हम पारंपरिक पद्धति से मछुआरी करके हमारी रोजी रोटी चलाते हैं। ऐसे जगह में झूठ बोल के यहाँ पे मैंग्रोव अपना डंपिंग ग्राउंड सेटअप किया सरकार ने, और पूरा इलाका जहरीला कर दिया है। आप देख सकते हो वीडियो में इस तरह का स्कैवेंजिंग बर्ड का जमावड़ा वहाँ पे है। तो इसके लिए हमारे सरकार के पास कोई प्रोविजन नहीं है, कोई विजन नहीं है कि किस तरह का डिस्पोजल ये होना चाहिए। और मुंबई जैसे शहरों में तो ये सबसे बड़ी समस्या है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। नंद क्योंकि कुमार इसके पवार बाद साहब हमारे साथ पिछले दिनों स्टालिन दयानंद साहब थे। उन्होंने ये कहा कि अगर आपको ये ऐसा गार्बेज डंप जो है, ये इतना बड़ा ये डंपिंग ग्राउंड अगर आपको हटाना है तो आप उसको बिल्डिंग के लिए परमिशन दे दो, बिल्डर्स अपने आप हटवा देंगे। ज़्यादातर यही होता है, मुंबई शहर में आज तक यही हो रहा है। और जो गार्बेज डिस्पोजल है, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम्स इन द हिस्ट्री ऑफ द बीएमसी। नंद कुमार पवार साहब, बिल्कुल आपने सही कहा, और स्टालिन दयानंद साहब ने भी सही कहा था, क्योंकि ये सबसे बड़ा स्कैम तो है ही पैसे बनाने का। क्योंकि जैसे कि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है कि चिंचोली गांव बंदर जहाँ पे बड़ा डंपिंग था, वो बिल्डर लोगों ने प्रस्ताव देने के बाद वहाँ से डंपिंग ग्राउंड हटाया गया और वहाँ पे बड़े बड़े मॉल खड़े किए। अभी इसका भी नतीजा यही होने वाला है। बिल्डर को प्रपोजल देंगे सरकार को कि यहाँ पे अभी कैपेसिटी खत्म हो गया, अभी दूसरा मैंग्रोव का एरिया ढूंढो, क्योंकि मैंग्रोव के अलावा उनको कुछ दिखता नहीं जी। तो यहाँ पे टावर बनेंगे। क्योंकि ये एरिया कम से कम 141.77 हेक्टर्स, 5.25 स्क्वायर किलोमीटर का इतना एरिया है। यू जस्ट इमेजिन इसमें से कितना पैसा बन सकता है। करेक्ट, यू आर टॉकिंग ऑफ लैक्स ऑफ करोड्स। लैक्स ऑफ करोड्स, दैट्स राइट, एंड लैक्स ऑफ करोड़, दे विल अर्न लैक्स ऑफ करोड्स टू किल ऑफ द सिटी। कहने का मतलब ये हुआ, मतलब हम लोग अपने जनाजे की तैयारी कर रहे हैं ये सब करके। कहने का मतलब ये हुआ। I can't figure this out. प्रदीप जी, I can't figure this out. नंद कुमार साहब, आप मुझे ये बताइए, ठाणे क्रीक को हमने जहरीला कर दिया, वर्सोवा क्रीक को इट इज द सेम सिचुएशन देयर, पूरा जहर भर दिया है वहां पे। जहां पर आपको कोई एम्प्टी स्पेस दिखती है वहां पे मैंग्रोव्स को आप ऐसी की तैसी कर देते हैं, ये जानते हुए कि दैट इज द ओनली रीजन विच कंट्रोल्स द इंटरटाइडल जोन। हाई टाइड से हमें बचाते हैं, एंड जो रेन वाटर बाहर जाता है, रेन वाटर का जो फ्लो है, इट कंट्रोल्स द रेन वाटर फ्लो। उसके अलावा सर बाकी जितनी भी जगह हैं जहां जहां पर हम लोग जाते हैं, जहां जहां जो मुंबई शहर को बचाने की जो प्रकृति द्वारा हमें चीजें दी गई हैं उसको हम खत्म करते हैं। मतलब या आपको मैंग्रोव दिखते हैं, और दूसरी चीज अब आपको सॉल्ट पैन दिख रहे हैं। तो अगर सॉल्ट पैन्स पे भी इमारतें बननी शुरू हो गई तो क्या हाल होगा? नंद कुमार पवार साहब बताएं। एग्जैक्टली सॉल्ट पैन का सबसे बड़ा इशू आजकल है मुंबई में, क्योंकि मुंबई में स्पेशली इन द ईस्टर्न सब ऑफ मुंबई देयर आर अबाउट 5,300 acres of salt pan land Yes. available. Okay, and out of which there are 315 acres of land denotified. In fact, all salt pan land considered to be CRZ 1A area, there cannot be any kind of reclamation or development is allowed. But in 2017, this salt pan land has been denotified and removed from the CRZ 1 area and open it up for the development. So accordingly, 315 acres of land proposed for low-cost housing and affordable housing by the government, then government. And thankfully, when government changes in 2019, the Aditya Thackeray had cancelled that. Yes, he had. Yeah,
and as of now, the salt pan are safe. But let me tell you, the eastern suburb was saved in worst flood nightmare in 2005 because of the presence of active salt pans, which is essentially lowland area. All flooding water hold in this area and not allow this water to go into the human settlement, and the eastern suburb was completely saved because of that. If this area will be landfilled, there is no scientist to comment on what will be the result of that. We We did. don't want to apply our common sense, just we see from which way we can make the money. That's We right. are only concerned with money. There is no regard for the environment. There is no regard for the mangroves and the So it's wetlands. not just a regard for the environment, it's a regard for human life, the quality of human life. Pradeep ji, आप कुछ बोल No, I रहे want हैं, please. पवार साहब, आपने बहुत स्टडी किया है सॉलिड मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड. पूरे देश द होल वर्ल्ड व्हिच इज द डेवलप्ड कंट्रीज में हु इज गॉट वे हेड वेयर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड, हाउ दे डू इट. आपने कुछ स्टडी किया है इसके बारे में कि विदेश में किस प्रकार? पहली बात तो वी आर वेरी इनसेंसिबल. वी नेवर सीरियस अबाउट व्हाट वी आर डूइंग. अभी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी शुड बी अवे एटलीस्ट 5 किलोमीटर फ्रॉम द हैबिटेशन क्लस्टर. What you are doing here in India, what you are doing here in Mumbai, the solid waste management is happening inside the habitation cluster. Yes. For example, the Kanjur dumping ground, hardly, I think, under 200 meters away from the Kannaman Nagar. You just imagine the status of their living. Okay? And there is no regard. Okay? There is no scientific parameters are been employed while sorting the solid waste and treating solid waste. आपने देखा वीडियो कल ही शेयर किया था कि पूरा ड्रोजर के साथ पूरा कचरा लेवल किया जाता है. देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट इज हैपनिंग. सब ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट इकट्ठा करके सबके ऊपर मिट्टी डाली जाती है. तो दिस व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट वी आर डूइंग. एंड कांजूमार्ग सपोज टू बी द मोस्ट साइंटिफिक डिस्पोजल सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल साइट. And what is scientific about that? क्या कर रहे हैं हम? कुछ नहीं कर रहे. This is only eye wash. हम कोई norms follow नहीं कर रहे. In fact, there are very specific rule in MSW 2000 that is amended again in 2016, I think. अलग अलग नियम आए लेकिन उसका कोई पालन होता नहीं. ये डंपिंग ग्राउंड खाली पैसा बनाने का जरिया है. कॉन्ट्रैक्टर्स या फिर ऑफिशियल्स या पॉलिटिकल लोग इसमें से पैसा बनाते, इनके लिए यही मायने रखता है. बाकी कोई मायने रखता है. पब्लिक गई भाड़ में. So in effect, Kanjurmarg will remain a dumping ground till such time as the builders do not get into the act. पवार साहब, कोई विदेश में कोई रोल मॉडल कंट्री है जिसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं वेयर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड? ऐसे कोई देश है जो इतने फाइन तरीके से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रहा है और एक मिसाल की तरफ से हम लोग इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? जरूर सर. मैंने 2 साल पहले मैं मलेशिया गया था सर. तो मलेशिया में मेन सिटी के अंदर कुआलालंपुर में मैंने जो उनका ड्रेन देखा, ओपन नाला, आप मानोगे नहीं कि क्लीन पानी था. ओके. लिटरली क्लीन पानी. कचरे का एक ड्रॉप भी नहीं था कचरे का. एकदम क्लीन फिल्टर पानी. तो इसका मतलब क्या हुआ? और हमारे नाले देखो आप, आपके सामने मैंने वीडियो पोस्ट किया है. Exactly. वो नाले की हालत देखो. तो हाउ वी आर सीरियस अबाउट ट्रीटिंग दिस सॉलिड वेस्ट? So over here, I have this from Sweden. There are 32 waste management plants in Sweden which produce heat as in electricity for 810,000 Swedish households and electricity for about 250,000 private houses from solid waste. So you have an example in front of you as to what can be done with the solid waste. 32 waste management plants. Now, why can't we do it over here? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि पहले मुझे अभी तक याद है IIT बॉम्बे मुंबई had come up with a solution कि ये करिए and we will be able to produce electricity for you from this waste. Why aren't we doing it? क्यों नहीं कर रहे हम लोग? मेरी समझ के बाहर है. चलिए उसके बारे में कभी और बात करेंगे सर. लेकिन फिलहाल जो काम आप कर रहे हैं उसके लिए आपको साधुवाद. हम लोग बड़े गर्वान्वित महसूस करते हैं अपने आप को कि आप जैसे लोग हमारे बीच में हैं और जिस बहादुरी के साथ आप काम कर रहे हैं. Very frankly speaking,
It's hardly ever that I've seen people with so much of courage as yourself and all the others who work with you. All the best, sir. Thank you very much. Mumbai, Thank you, sir. Thane, Maharashtra is very, very proud of Inviting me, you. sir. Nandakumar Pawar sir, namaskar. We missed Nambiar sir last time, but thankfully this time he's available, and nice to see his smiling face always. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. For one more opportunity offered to be present with you. Thank you so much. Thank you. Really wonderful, absolutely wonderful. But the only thing is, what he has to say is terrible. I mean, it's Sir, absolutely you terrible. know, your statistics about Sweden. Yes. This is, since you're already taken, I mean, you've been fighting this battle for a long time. Actually, ये रोल मॉडल करके आप अगर इस चीज को हाईलाइट कर सकते हैं, Slightly expensive. No, It's slightly even if it is expensive, that's all. expensive, I mean, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके अगर समाज को बचा सकता है, देश को अगर बचा सकता है, मुंबई को अगर बचा सकता है। सर तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये, अभी हमारे साथ शायद अरशद आजमी साहब हैं कांग्रेस के। Yes. लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, अभी तक जो मुंबई को बचा के रखा है, वो जो एमबीए की सरकार थी 2019 के बाद उसने बचा के रखा है साहब। जो आरए फॉरेस्ट को फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया, सॉल्ट पैन लैंड्स को दोबारा नो डेवलपमेंट जोन डिक्लेयर किया गया, उसकी वजह से आज भी मुंबई बचा हुआ है। वरना मतलब हम लोग तो गए थे। अरशद आजमी साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार साहब। नमस्कार साहब, नमस्कार। कैसे हैं? सॉरी आपको थोड़ा वेट करना पड़ा, रियली एंड ट्रूली सॉरी, बट व्हाट मिस्टर नंदकुमार पवार हैड टू से वाज, वो बहुत खतरनाक चीज थी। और यहाँ पर मुझे एक बार फिर बताना पड़ेगा हमारे दर्शकों को कि एमबीए सरकार के दौरान 2019 से लेकर के 2022 तक जो सरकार चली, जो काम उन्होंने किया उस वक्त, जैसे आरए फॉरेस्ट को बिल्कुल फॉरेस्ट डिक्लेयर करना, सॉल्ट पैन लैंड को जो डी नोटिफाई किया गया था उसको दोबारा नोटिफाई करना और नो डेवलपमेंट जोन करार कर देना, इसकी वजह से आज मुंबई बचा हुआ है। सीधी सादी बात है। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि एमबीए के जितने भी घटक दल हैं, जैसे आप हो गए, उद्धव ठाकरे सेना हो गई, एनसीपी हो गए, आप सब लोगों को इसके बारे में मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा चर्चा करनी चाहिए कि किस प्रकार आपने वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, और मुझे कोई संकोच नहीं है ये बोलने में, आप लोगों ने मुंबई शहर को बचाया है साहब। सीधी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिलहाल अरशद आजमी साहब, कल हम लोगों ने एक बड़ी विचित्र चीज देखी। दो फाउंडेशन डे, एक ही पार्टी के दो फाउंडेशन डे, एक उद्धव ठाकरे साहब की सेना, दूसरी तरफ क्या वो शिंदे साहब की सेना। इसके बारे में कुछ कहेंगे साहब आप, आजमी साहब? हाँ देखिए, ये कल एक ही पार्टी के दो फाउंडेशन डे मनाए गए। मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा देखा गया पूरी राजनीति के उसमें, क्योंकि जो असली शिवसेना के हकदार थे उन्हें किसी तरह षड्यंत्र करके उसकी पार्टी से बाहर कर दिया गया, और वो लोग जिन्होंने धोखा देकर उस पार्टी पर कब्जा किया, आज वो उस पार्टी के असली मालिक बताए जा रहे हैं। लेकिन देखिए, राजनीति में कोई भी फैसला, आखिरी फैसला जो होता है लोकतंत्र में, वो जनता का फैसला होता है, और जनता का फैसला अभी बाकी है। वो मुंबई महानगर पालिका का भी बाकी है, विधानसभा का भी बाकी है, और लोकसभा का भी बाकी है। तो ये जो तीनों फैसले जनता देगी, इसी में तय होगा कि कौन सही था जिसने वो फाउंडेशन डे मनाया और किसकी वो पार्टी थी। ये इन तीनों इलेक्शनों में तय हो जाएगा, और मुंबई और महाराष्ट्र के लोग इसका फैसला सुना देंगे। आजमी साहब, आप जो कर्नाटक मॉडल के बाद कांग्रेस रिसर्जेंट हो गया, कांग्रेस में ऊर्जा जबरदस्त, और कांग्रेस वही एक अपीसमेंट की तरफ से मुसलमान वोट, दलित वोट, ओबीसी वोट, एससी एसटी वोट जो उनके पहले से थे और रीजनल पार्टीज की तरफ गए थे, उसको वापस कंसोलिडेट करने में लगा, और लगना भी चाहिए, करना भी नहीं चाहिए, करना भी चाहिए। और एक बहुत बड़ा जबरदस्त टक्कर आप ऑर्गेनाइज तरीके से जा रहे हो 2024 में। बट क्या ये सही है कि जिस प्रकार कल जयराम रमेश जी ने विरोध कर दिया कि गांधी पीस प्राइज आपने गीता प्रेस को कैसे दिया, जो कर्नाटक में चल रहा है कि सावरकर को हटा दो, हेगडेवार को हटा दो, फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड में मिक्स्ड रिएक्शंस कांग्रेस। तो कांग्रेस जिस प्रकार से चल रहा है कि 14 to 20% मुसलमान वोट जो पूरे पैन इंडिया में है, उसको वापस लेके कांग्रेस के साथ रखकर एक जबरदस्त मुहिम चला रहा है। तो क्या ये ठीक रहेगा? हाउ यू गोइंग टू एक्सप्लेन टू द पीपल दैट मुस्लिम कंसोलिडेशन कांग्रेस में कैसे हो रहा है? आजमी साहब, आवाज है। देखिए साहब, इसमें अपीसमेंट की कोई बात नहीं है। आज जो
जिस तरह से देश में जो हालात बने हुए, जिस तरह एक सरकार इस देश पर इस वक्त बैठी हुई है और वो सारे लोकतांत्रिक सिद्धांतों को, सारे लोकतांत्रिक संस्थाओं को जिस तरह से दबा रही है, जिस तरह से खत्म कर रही है, तो उसको और बेवजह के जो मुद्दे हैं वो बार बार बाहर आ रहे हैं, जिनकी कोई जरूरत नहीं है। जो लोगों की आम जिंदगी में रोजमर्रा के मुद्दे हैं उनको छोड़कर बाकी के मुद्दों पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह काम कर रही थी, उसको देखते हुए जिस तरह से कांग्रेस ने कर्नाटक में जीतने के बाद, वो गैर जरूरी चीजें थी जो उसमें कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां बना रखी थी। लोगों को रोटी कपड़ा और मकान के सवाल खड़े थे और वो लोग उनको जो है वो धार्मिक मुद्दों में और 50-100 साल पुरानी बातों में उलझा कर रखा हुआ था। उसको बाहर उससे बाहर लाया कांग्रेस ने कर्नाटक ने कांग्रेस को सत्ता में लाया और कांग्रेस ने उससे वहां के लोगों को बाहर लगाया और वो तमाम मुद्दे जो गैर जरूरी थे उनको हटाकर बाहर रख दिया। अब अपीसमेंट का जो सवाल है, देखिए आज हिंदुस्तान में इस मुल्क का सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि इस मुल्क के दलित और दूसरे भी जो पिछड़े जाति के जो तमाम लोग हैं जो पिछड़ गए पिछले दिनों में, वो तमाम के तमाम लोग ये चाहते हैं कि देश में एक शांति का माहौल रहे और उस शांति के माहौल में जो है देश की तरक्की के साथ देश के हर नागरिक की तरक्की कैसे हो उस पर फोकस करने वाली सरकारें चुनकर आए। इसलिए जो है ये लोगों ने कर्नाटक में उसका एग्जाम्पल दिया और आगे भी देखिए आप, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, यहाँ चुनाव अब जो होने वाले हैं, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकारें वहां पर काम कर रही है जैसे राजस्थान में कर रही है, तो वो एक आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दों पर काम कर रही है, जो उसे रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले मुद्दे हैं उस पर काम कर रही है। और लोगों को यही चाहिए भी, और गैर जरूरी मुद्दों की कोई जरूरत नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की अब जैसे आपने बात कही, क्या आपको लगता है इस देश में आज जहां पर लोगों को महंगाई इतनी ऊपर जा चुकी है, जहां बेरोजगारी 25% से ज्यादा जा चुकी है, जहां रुपया डॉलर के मुकाबले इतना नीचे आ चुका है, जहां तेल की कीमतें 100 से पार जा चुकी हैं, आपको इस इतनी अफरा तफरी में और इतनी गड़बड़ी में क्या कोई दूसरे मुद्दे दिखाई देंगे? लेकिन इस सरकार को दिखाई देते हैं, भाजपा की सरकार को, इसलिए कि भाजपा इन तमाम सवालों पर फेल है। भाजपा कुछ कह नहीं सकती। यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश का चक्कर लगाइए आप, अलग अलग तरीके के रिवाज हैं, अलग अलग तरीके की रस्में हैं, अलग चार बड़े मजहब भी अगर आप लेते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन चारों मजहबों में भी बहुत अलग अलग रस्में हैं। किस तरह से मुमकिन है उन चीजों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना? अगर आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप इन तमाम चीजों को एक प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं, तो लाइए, ड्राफ्ट बनाइए उसका, और ड्राफ्ट बनाकर जनता के बीच जाइए, लोगों को बताइए, समझाइए। पूरा देश अगर सहमत होता है, पूरा देश अगर एकजुट होता है, तो अगर सबकी सहमति से कोई काम होता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। साउथ के मामले अलग हैं, नॉर्थ के मामले अलग हैं, ईस्ट के अलग हैं और वेस्ट के अलग हैं, आप जोड़ दीजिए। लेकिन आजमी साहब क्या ये जरूरी है? आजमी साहब ये बताएं, क्या ये जरूरी है? देखिए, इसके पहले जो 21वां लॉ कमीशन था 2018 में, उन्होंने कहा न ये जरूरी है, न इसकी जरूरत है, करेक्ट, और न इसे लाना चाहिए। अब 22वें लॉ कमीशन को 4 साल में ऐसे क्या हालात बदल गए कि उन्हें लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है। तो न ये जरूरी है, न जरूरत है। जरूरत जो है वो दिखाई दे रही है। अभी आज देश की जो हालात हैं, आप देखिए कि 90% लोग देश में आज ऐसे हैं, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की है भारत, उसमें 90% लोग ऐसे हैं जिनकी एक महीने की आमदनी 10,000 रुपए से भी कम है। तो जरूरत है उस 90% गरीब आदमी की आमदनी को बढ़ाने की। जरूरत है उस बेरोजगार युवा को, जिसका भविष्य अंधेरे में है, जिसे समझ में नहीं आता कि आने वाली जिंदगी में वो क्या करेगा, उसके अंदर विश्वास पैदा करने की जरूरत है और उसे एक मार्ग दिखाने की जरूरत है और रोजगार देने की जरूरत है। तो इन चीजों की जरूरत है। पर इन अफसोस की बात है कि इन तमाम चीजों को उसको बगल में रख के और दूसरे मुद्दों को उभारा जा रहा है। लेकिन झारखंड में जिस तरह के हालात, एक चीज तो है अरशद आजमी साहब, जिस प्रकार अभी राहुल गांधी जी ने बीड़ा उठाया है, जिस प्रकार अभी राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा पहले थी, उसके बाद जो कर्नाटक में उनकी कैंपेन रही, और उसके बाद अमेरिका में जाकर के जो कुछ भी उन्होंने कहा, और अभी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 आने वाली है, लिहाजा एक चीज तो बड़ी साफ हो गई है कि राहुल गांधी जी की वजह से भारतीय जनता पार्टी में हड़बड़ी जरूर मच गई है,
सीधी बात है। और आज की तारीख में जिस प्रकार आप लोगों के ऊपर अटैक शुरू हो गए हर तरफ से, कांग्रेस के ऊपर स्पेशली, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें, उससे लगता ऐसा है कि आप कुछ ठीक कर रहे हैं, तभी इस प्रकार के अटैक होते हैं। आजमी साहब जी बिल्कुल सही बात है। देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया है, हालांकि साहब मेन स्ट्रीम मीडिया तो उसे नहीं करना चाहिए। अब मेन स्ट्रीम मीडिया में तो आप लोग आ गए हैं जो सही मुद्दों पर बात करते हैं और सही मुद्दों को जनता के बीच ले जाते हैं। ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये भारतीय जनता पार्टी की एक प्रोपेगेंडा टीम है, एक प्रचार करने वाले लोग हैं जो दिन भर प्रचार करते हैं। आप देखिए आज 2 दिन से दिखा रहा है प्रधानमंत्री जी अमेरिका जा रहे हैं जी, तो 2 दिन से दिखा रहा है कि अमेरिका में क्या तैयारियां हैं। पूरा मणिपुर जल गया, मणिपुर में लोग मार दिए गए, उनके मकानों को जला दिया गया, उनको उनके घरों से उठाकर रिलीफ कैंपों में जाना पड़ गया। लेकिन आप देख लीजिए कि पिछले हफ्ते 10 दिन 15 दिन या पूरा महीना ले लीजिए, एक भी बड़ी खबर, एक भी खबर जाकर वहां पर ये मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही है। 1 महीने बाद देश के गृह मंत्री गए वहां पर और जैसे लौट कर आए दूसरे दिन फिर वो वहां पर आगजनी और मारापीटी शुरू हो गई। प्रधानमंत्री को जाने का समय नहीं मिला और अफसोस कि अब प्रधानमंत्री तो अमेरिका जा रहे हैं, पता नहीं वो अमेरिका से लौट कर आएंगे तब तक मणिपुर बाकी भी रहेगा या फिर मणिपुर पूरी तरह से ये जो उग्रवादी हैं जिसे समर्थक है आरएसएस का, ये पूरा मणिपुर को तहस नहस कर देंगे। तो ये बात सही है कि कांग्रेस जो है, देखिए वो राइट ट्रैक पे है। राइट ट्रैक पे इसलिए है कि कांग्रेस अब आम आदमी के मुद्दों को न सिर्फ छू रही है, न सिर्फ बात कर रही है, बल्कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के लीडर है और दूसरे भी तमाम लीडर, वो जनता के बीच जाकर उनसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी चीजों को समझ रहे हैं। और जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, कांग्रेस की सरकार उन चीजों को अमल में ला रही है, उन चीजों को पूरा करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए ये मीडिया बौखलाया हुआ है। कांग्रेस के ऊपर हम लोगों ने एक चीज देखी कल, और ये मैं अपना व्यक्तिगत तजुर्बा आपको बता रहा हूँ, प्रदीप जी और मेरा और हमारे बाकी जितने भी लोग हैं, हमारे जितने भी पत्रकार हैं पूरे देश में, ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपने कहा उसने दिखाया नहीं। राहुल गांधी जी का जन्मदिन कल था और उस जन्मदिन के दौरान जिस प्रकार वो सेलिब्रेट किया गया हर कांग्रेस की शाखा में, तालुका में, गांव में, हर जगह पर, वो जबरदस्त था। बल्कि इतना उत्साह, इतनी ज्यादा एनर्जी लेवल, इतनी ज्यादा संगठनात्मक ताकत कांग्रेस में मैंने पिछले 10 या 15 साल में नहीं देखी है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। जिस प्रकार आज की तारीख में आप लोग काम कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? अर्शद आजमी साहब जरा बताएं। देखिए साहब, इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि ये बात कांग्रेस के तमाम लोगों को समझ में आ गई कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश की सत्ता से बाहर करने का अगर कोई इसको इस काम को अंजाम दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। ये बात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को समझ में आ गई कि आज पूरा भारत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ नजर उठाए देख रहा है कि सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी का और उसके उग्रवाद का मुकाबला कर सकती है। ये बात जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई और जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा में लोग जोग दर जोग उमट कर चले आए और वो राहुल गांधी से आके लिपट जाते थे, उनसे अपनी बातें कहने लगते थे, उनसे अपना आंसू गिराते थे, तो ये बात लोगों को, कांग्रेस के तमाम लोगों को समझ में आई कि हम जिस तरह से बैक फुट पर खड़े थे, हमें फ्रंट फुट पर आना पड़ेगा। क्योंकि आज वो जनता जो त्रस्त है, उसको विश्वास अगर किसी पार्टी पर है तो वो कांग्रेस पे है कि कांग्रेस ही इनका मुकाबला कर सकती है। बस उस एक भरोसे ने, उस जनता की जो भरोसा जनता की नजर के अंदर कांग्रेस के लोगों को नजर आया, उसने कांग्रेस पार्टी को दोबारा खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने जो 4000 किलोमीटर का जो यात्रा की, वो एक महज यात्रा नहीं थी, बल्कि वो यात्रा थी जो उस पूरे दरमियान में लोगों के दर्द के बीच से गुजरती रही, लोगों के एहसास को समझती रही और उससे ये नतीजा निकला कि अगर लड़ना है तो पूरी तरह से मैदान में आना होगा। अब आगे पीछे वाली राजनीति नहीं होगी। आजमी साहब, इसमें कोई संकेत नहीं है कि यू आर डूइंग फैंटास्टिक। कांग्रेस रिसर्जेंट कांग्रेस है जो 2019 में 20% के आसपास वोट शेयर है। ये जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, वेणुगोपाल, सब पूरे रैंक एंड फाइल मिलके आज करीबन 20 से 25% तक आपके वोट शेयर शायद लेके भी आया होगा। बट बीजेपी का कहना है कि 9 साल बेमिसाल, 9 साल में हमारे देखो प्री मोदी, पोस्ट मोदी। प्री मोदी कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं है,
पोस्ट बॉडी किस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है। बोले कि अमृत काल, लूट काल, आपके यूपीए के जमाने में लूट काल हुआ करता था, ये अमृत काल है। नितिन गडकरी से 9 साल में जो हमने काम किया और 60 साल कांग्रेस के, आप देखिए 9 साल में ज्यादा काम हुआ है। एयरपोर्ट्स के आप देखिए 74 एयरपोर्ट प्री मोडी, पोस्ट मोडी 148 एयरपोर्ट, यानी डबल, हर चीज डबल 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 हो गया। तो आप इसको कैसे लोगों को कन्विंस कर दिया, और गरीब से गरीब लोगों को भी 80 करोड़ लोगों को खाना देना, 12 करोड़ नल से जल, अलग अलग शौचालय की स्कीम 12 करोड़। तो सर ये बीजेपी भी अपने काम को सबके सामने रख रहे, बट आप कैसे लोगों को और कन्विंस कर पाओगे कि लूट काल नहीं था और ये अमृत काल नहीं है? आजमी साहब। अच्छा साहब, मैं आपको मैं अपनी बात में सवाल भी पूछना चाहता हूं। क्या ये अमृत काल है जहां पर आपने कहा कि 80 करोड़ लोग, क्या ये 80 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, इसे अमृत काल कहा जाएगा? क्या किसी सरकार की ये उपलब्धि हो सकती है? अमृत काल होता कि ये 80 करोड़ लोग जो है रोजगार के साथ जुड़े होते, अपने पैरों पे खड़े होते और अपनी मेहनत से काम कर पैसा कमाकर अपनी रोटी खा रहे होते, तब ये अमृत काल होता। अमृत काल होता कि जब किसानों की आमदनी दुगनी हो गई होती, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था कि इनकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। अमृत काल होता है कि सही मायनों में वो 60 रुपया 65 रुपए का जो पेट्रोल था, वो अपना आलमी बाजारों में उसकी कीमत कम होने के बावजूद भी 100 रुपए पर पहुंच गया, वो 35 और 30 रुपए पर आ जाता, जैसा रामदेव बाबा ने कहा था। अमृत काल होता तो वो 45 रुपए की शक्कर 13 रुपए किलो में मिलती, जैसा स्मृति ईरानी ने कहा था। मैं आपको बताऊं, अमृत काल होता तो अपना 12 रुपया यूनिट की जो बिजली थी 1 रुपया 10 पैसे में मिलती, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था। अमृत काल होता तो आज देश की बेरोजगारी की दर जो है वो 25% नहीं होती। अमृत काल होता तो आज इस देश के 90% लोगों की आमदनी 10,000 रुपए से कम महीने में नहीं होती। अमृत काल अगर होता तो आज इस देश के अंदर जिस तरह से लोग एक दूसरे के खिलाफ नफरत से लड़ रहे हैं, लोग मोहब्बत से एक दूसरे के साथ खड़े होते। मॉब लिंचिंग हुई, देश का प्रधानमंत्री खामोश रहा। नोटबंदी हुई, 125 लोग कतारों में मर गए, देश का प्रधानमंत्री खामोश रहा। जीएसटी गलत तरीके से लगा दी गई, 6,000 लोग जो कंपनियां थी छोटी वो बंद हो गई, देश का प्रधानमंत्री बेरोजगार रहा। जंतर मंतर पर बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले जंतर मंतर पर बेटियां बैठी रही, उन पर पुलिस लाठीचार्ज करती रही, देश का प्रधानमंत्री खामोश रहा। मुझे बताइए कि देश के प्रधानमंत्री का खामोश रहना क्या ये अमृत काल है? आज आप ये देखिए कि मणिपुर जल रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का एक सिंगल जवाब उसके ऊपर नहीं आता। किसान 700 किसान आंदोलन में दिल्ली के बाहर बैठे किसान 700 लोग मर गए, प्रधानमंत्री ने एक जवाब नहीं दिया। क्या ये अमृत काल है? क्या ये प्रधानमंत्री की जवाबदेही नहीं थी कि वो इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम हादसों पर, इन तमाम मौतों पर कुछ न कुछ बोलते निकलकर लोगों को अपने करीब लाने की कोशिश करते? लेकिन 9 साल गुजर गए, देश के प्रधानमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, देश के प्रधानमंत्री ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। जनता जवाब मांग रही थी कि बताइए अडानी से आपका रिश्ता क्या है, लेकिन प्रधानमंत्री जी पूरी संसद में खड़े हुए अपना सीना ठोकते रहे, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया कि अडानी से उनका रिश्ता क्या है। 10 लाख करोड़ रुपए पानी हो गए, कितने लोगों का उसमें पैसा डूब गया, लेकिन प्रधानमंत्री को यह समझ नहीं आई कि ये पैसा गरीब आदमी का था, उस गरीब आदमी का जिसे आपने 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, आपने उसके खुद के पैसे भी छीन कर रख लिए। तो ये कौन सा अमृत काल है? ये अमृत काल, अगर ऐसा अमृत काल है जिसमें बहु बेटियां सड़कों पर पीटी जाएं, ये ऐसा अमृत काल है जिसमें मजहब के नाम पर लोगों के घर खाली करा दिए जाएं, तो ऐसे अमृत काल की अरशद आजमी साहब, आप एलपीजी सिलेंडर भूल गए। एलपीजी सिलेंडर, अमृत काल में एलपीजी सिलेंडर जो है वो 400 की जगह 1200 हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सा अमृत काल है। अमृत काल तो जब होता कि पूरे लोगों के पास, हर आदमी के पास रोजगार होता, और फिर हम बैठकर बात करते, देश में खुशहाली होती, और फिर हम बैठकर ये बात करते कि आइए अब मजहब के नाम पर भी एक हो जाया जाए, और जात और इसके नाम पर भी एक हो जाया जाए, इलाके के नाम पर भी एक हो जाया जाए। देखिए, कुछ कहने को नहीं। उत्तराखंड में जो हुआ, वहां पे नौजवान जो है वो बेरोजगारी को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे।
अब सरकार जवाब क्या देती? तो व्यापार जहाज निकाल दिया उन्होंने। तो ये But that's अमृतकाल terrible. नहीं है, Absolutely terrible. And that is something which is absolutely inexcusable. और वाहियात बात क्या है, ठीक है, मणिपुर के बारे में तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने कुछ ना कुछ बोला है, उत्तराखंड के बारे में तो हर एक ने चुप्पी साधी हुई है साहब, कोई बात ही नहीं कर रहा उसके बारे में। अजीबो गरीब मसला है। न सिर्फ मैं आपको बताऊं, न सिर्फ चुप्पी साधी हुई है, बल्कि वो लोग जो वहां पर दंगा भड़का रहे थे, प्रबोधानंद नाम का एक आदमी है जिनके ऊपर पहले भी धर्म संसद चलाने के नाम पर FIR हुई है, तो न सिर्फ सरकारों ने और उनके नेताओं ने वहां पर चुप्पी साध रखी थी, बल्कि वो पूरे शहर में, वो शख्स पूरे शहर में घूमता रहा, लोगों को भड़काता रहा। इवन पुलिस वहां पर खड़ी रही, लेकिन पुलिस ने उसे बोलने से रोका तक नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसे लोगों को खुलेआम छोड़ दिया गया जो वहां पर नफरत फैला रहे थे, लोगों को मारने पीटने की बात कर रहे थे और ये बता रहे थे कि फला आदमी ने आपका खाना, आपका पैसा, आपकी नौकरी, आपका घर आपसे छीन लिया है। तो ये अमृतकाल नहीं हो सकता। अमृतकाल, चलिए, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आज की तारीख में राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान की बहुत जरूरत है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। मैं आपको एक चीज हालांकि उस सवाल में नहीं थी। देखिए, आज राहुल गांधी जी अमेरिका से लौट रहे हैं जी, और प्रधानमंत्री जी अमेरिका जा रहे हैं जी। आप देखिए कि जिस तरह से राहुल गांधी जी का दौरा रहा पूरे अमेरिका में, जिस तरह उन्होंने यूनिवर्सिटीज में जाकर लोगों से, स्टूडेंट से और लोगों से मिले, पत्रकारों से मिले, वहां के थिंक टैंक से मिले, और जिस तरह उन्होंने अपने विजन को, अपने भारत के विजन को पेश किया, तो मतलब ये मौका है प्रधानमंत्री जी के पास। अब प्रधानमंत्री अमेरिका में जाके देखना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसका जवाब देते हैं कि नहीं। Unlikely. मनमोहन सिंह कहा करते थे प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह को, जिन्होंने 100 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ। देखना ये है सर, देखना ये है कि क्या प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने भारत में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वो अमेरिका में जाकर वो जो ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन को एड्रेस करने वाले हैं, उसके बाद वो वहां पर पत्रकारों को उनके सवालों का जवाब देंगे या नहीं देंगे, ये देखना है। लोग मुकाबला बता रहे हैं कि राहुल गांधी। हम भी इंतजार करेंगे अरशद आजमी साहब, हम भी इंतजार करेंगे। अरशद आजमी साहब की मुस्कान देखने वाली है जब उन्होंने ये सजेशन दिया, जबरदस्त। राहुल गांधी जी जिस प्रकार से जोश है, फैंटास्टिक, रैंक एंड फाइल में वो जोश देखो, वो जो ऊर्जा है, जबरदस्त ऊर्जा है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद टू पीपल एट द मोमेंट. One, of course, is Mr. Rahul Gandhi. The other is Raj Thakre. But of course, Arshad Azmi will not agree with me over there. But as far as Rahul Gandhi is concerned, he has managed to revive and resurrect the Congress, and that, by the way, is absolutely fantastic. Arshad Azmi साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. Thank you very much, sir. नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद. Thank you so much, sir. जय हिंद. That was nice. That was really truly nice. I hope the Prime Minister actually addresses the press conference. I would love to. He's given some interview to a newspaper. Yeah, we don't know. Well, it's to Where he's lashed out of China, saying that you need to have peace in the border. He's given an interview to the Wall Street Journal. At least an interview has been published in the Wall Street Journal. I don't know whether the interview, well, it's an interview. Why should we disbelieve it? But and it's a lovely interview, by the way. And in the meantime, we have Mr. Hemant Kamble with us of the MNS, my favorite party, the Maharashtra Navnirman Sena. Hemant Kamble साहब, नमस्कार. नमस्कार. How are you, sir? I am fine. Wonderful, wonderful. नमस्कार. Wonderful to see you, sir. Wonderful. नमस्कार, sir. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, sir. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. So, sir, कल तो बड़ा अजीबो-गरीब विचित्र दृश्य हम सब लोगों को देखने को मिला. दो स्थापना दिवस, सर, दो फाउंडेशन डे. नहीं, ये तो पिछले एक साल से शिवसेना के जो दो टुकड़े हुए तो हम सब जानते हैं. और वर्धापन दिन या उसका स्थापना दिवस कौन मनाए, इसके ऊपर डिबेट मुझे लगता है डिबेट करने की जरूरत है. नहीं, वैसे ही पूछा मैंने आपसे, मतलब आपका पहला रिएक्शन क्या है, सर, ये देख करके? बस यही पूछा मैंने ये नहीं पूछा कि कुछ इसका विश्लेषण दें आप कुछ करें. So does that mean, very frankly, strictly between you and me and all our viewers,
Does that mean the end of the शिवसेना as we know it? कि शिवसेना जैसे हम जानते हैं उसका मतलब अंत हो रहा है या ये एक देखिए नया कैसे पुनर्जन्म किसी हो रहा भी है? नहीं, ये कोई एक इलेक्शन हो जाए तब पता चले कि कोई पार्टी इतनी जल्दी खत्म नहीं होती, कोई भी पार्टी। और जहां तक शिंदे जी का सवाल, एक नाथ शिंदे जी सीएम है और उद्धव ठाकरे जी अपनी पार्टी की कमान संभाले, जो भी उनके सिपा सालार उनके साथ बचे उनको साथ लेकर चल रहे। तो मैं समझता हूँ कोई एक इलेक्शन हो जाए, फिर वो कॉरपोरेशन की इलेक्शन हो, लोकसभा विधानसभा की इलेक्शन हो, तब पता चलेगा कि भाई कोई पार्टी को उनके कितना नुकसान हुआ है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि शिवसेना एक कैडर वाली पार्टी है, तो कितने कैडर इनके पास बचे हैं। क्योंकि देखो सेनापति तो भाग गए बहुत सारे, लेकिन कैडर अगर पार्टी के साथ अगर लगा रहे तो मुझे लगता है वो फाइटिंग स्पिरिट लीडर को भी आ जाएगी। तो इसलिए मैं इतने जल्दी तो कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पार्टी खत्म हो गई। भले आदित्य ठाकरे जी ने हमारे पार्टी के लिए कहा था कि मैं खत्म हुई जो पार्टी खत्म हो गई उसके बारे में बोलूंगा नहीं, लेकिन हम वो रिस्पेक्ट आदित्य ठाकरे जी या उद्धव ठाकरे जी को नहीं दे रहा हूं, मैं वो शिवसेना को दे रहा हूं जिसकी स्थापना बाला साहब ने की थी। Raj Thackeray Saab ne, he talked about the creation of Sena, the sentiments of creating Sena. He talked about Prabodh Dhankar Saab के जो contribution, the thought, the विचार थे. He talked about बाला साहब के विचार जिस प्रकार से थे. And he says the personal ambitions of some leaders has destroyed the very basis of why the Shiv Sena was created. Kamble साहब. तो how do you add on to that? जिस प्रकार से राज साहब के विचार थे इस पर्टिकुलर शिवसेना क्रिएशन विचार, प्रबोधन ठाकरे साहब, बाला साहब ठाकरे एंड एम्बिशंस, पर्सनल एम्बिशंस। देखिए कैसे ना कि शिवसेना की जो स्थापना है, तो शिवसेना ये नाम ही प्रबोधन जी ने दिया था। और जो थॉट था कि मराठी माणूस ये इसके सेंटर में था। मराठी माणूस का उसकी प्रोग्रेस और मराठी अस्मिता, फिर भाषा हो, संस्कृति हो, इन बुनियादी मुद्दों पर शिवसेना की स्थापना हुई थी। और मुझे लगता है 19 जून 1966 में जिस शिवसेना की स्थापना हुई थी उसको बतौर बाला साहब ने तो बहुत ही अच्छी तरह चलाया था। लेकिन पर्सनल एम्बिशन उद्धव ठाकरे जी ने, देखिए राज साहब ने कहा, कहीं पर भी उन्होंने नहीं कहा था कि मुझे शिवसेना प्रमुख बनना है। उन्होंने सिर्फ क्या मांगा था कि मुझे कोंकण दीजिए, मुझे नासिक दीजिए, मुझे विदर्भ दीजिए, मैं वहां पर शिवसेना को मजबूत करता हूं। लेकिन उद्धव ठाकरे जी की जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स था वो कहीं ना कहीं आड़े आ गया। और उन्होंने जिस तरह से जो राज साहब के साथ काम करने वाले लोग थे उनको जिस तरह से साइडलाइन करना शुरू किया था, और वही एक कहीं ना कहीं दोनों में दरार आने शुरू हो गई थी। और जो दरारें सिर्फ राज साहब और उद्धव ठाकरे जी में नहीं, तो आप देख रहे हो कि कितने बड़े कद्दावर नेता शिवसेना को छोड़कर गए। आज नारायण राणे क्या बोलते हैं, या जो भी पार्टी छोड़कर गए वो क्या बोलते हैं आप सुन रहे हो। तो पर्सनल एम्बिशन की वजह से एक इतनी बड़ी पार्टी का पतन हो रहा है, ये देखकर हमें भी दुख होता है और राज साहब को तो बहुत ज्यादा दुख होता है। कामरे साहब जी बोलिए प्रदीप। एसआईटी, एकनाथ शिंदे, देव फडणवीस साहब ने बोला कि एसआईटी विल बी लॉन्च अगेंस्ट करप्शन, years ऑफ करप्शन इन द बीएमसी। एसआईटी जरूरी है, हजारों करोड़ का घपला हुआ है, कोविड टाइम से बहुत घपला हुआ है, एसआईटी विल बी फॉर्म्ड। उद्धव ठाकरे जी ने आज पलटवार करते हुए कहा एक जुलाई को विराट मोर्चा होगा बीएमसी में। बीएमसी they will take a morcha, thousands and lakhs of people will assemble. ये corruption, बोलो 650 crores mismanagement by एकनाथ शिंदे, देव फडणवीस who are controlling the BMC right now. एकनाथ शिंदे, देव फडणवीस जी कहता है कि this is pure retaliation because आपका SIT इंक्वायरी चालू कर दिया। तो इसको कैसे देखते हो कामले साहब आप? How do you see this? प्रदीप जी, राजीव जी, मैंने एक करीबन 4 से 5 घंटे पहले एक ट्वीट किया था। अरे मैंने आदित्य ठाकरे जी को उसको स्पेशली टैग किया
कि 1 जुलाई को आदित्य ठाकरे जी महानगर पालिका पर जो मोर्चा खोल रहे हैं या मोर्चा लेकर जा रहे हैं, उसमें हजारों होंगे, लाखों होंगे, करोड़ों लोग होंगे, मुझे पता नहीं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आदित्य ठाकरे जी किस करप्शन की मांग करेंगे, किस करप्शन की जांच की मांग करेंगे, या किस करप्शन के खिलाफ बोलेंगे जो पिछले 30 सालों से वो महानगर पालिका में थे, और वो जो करप्शन हुआ है उसके बारे में बोलेंगे, या 1 साल पहले उन्होंने सत्ता के बाहर होने के बाद जो अब उनको लग रहा है जो करप्शन हो रहा है या हो रहा है, इसके बारे में वो सवाल पूछेंगे। पहले तो नैतिकता से, या आप एथिकली, not Mr. Aditya Thackeray, neither Mr. Aditya Thackeray nor BJP or Mr. Devendra Fadnavis have any rights to ask that there is a corruption, because they are partners for almost 30 years. अगर ऐसे एसआईटी, ऐसे क्या की इंक्वायरी होनी चाहिए तो वो पिछले 30 सालों की होनी चाहिए, ना कि 2 सालों की होनी चाहिए। ये मैं तो आपके चैनल पर भी कह चुका हूँ। अगर कैग की इंक्वायरी है, अगर स्पेशल वो जो एसआईटी की इंक्वायरी है, तो मुझे लगता है ये पूरे 30 सालों की होनी चाहिए। 30 सालों में जिस तरह से बीएमसी को लूटा गया, मैं भी एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, आंकड़े में बताता हूँ जो फिगर्स है। 2006 में हमारी पार्टी का फॉर्मेशन हुआ और 2007 में हम पहली बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन को हम लोग ने फेस किया था। देखिए, तभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट था 12,300 करोड़। आज क्या है कि आज बीएमसी का बजट है 52,000 करोड़, 52,000 करोड़। मुझे लगता है कि भारत के 6 से 7 जो छोटे छोटे राज्य हैं, उनके जो उनका सालाना बजट है उससे भी कई ज्यादा मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट है। अब मुझे एक बात बताइए, आदित्य ठाकरे जी हो या उद्धव ठाकरे जी हो, किस करप्शन के सवाल पूछने वाले हैं और किसको पूछने वाले हैं? मिस्टर इकबाल चहल, जिनके साथ आप भी काम कर चुके हो। तो जो सवाल आप पूछने जा रहे हो उसके पहले ये भी तैयारी करके रखिए कि पिछले 30 सालों पे आपने कितना पैसा कमाया, आपने कितना पैसा कितने करप्शन किए, फिर वो रोड्स में हो या आपका बातों सिर्फ 2 हो, या फिर जो नाला सफाई हो, कहां पर करप्शन नहीं हुआ। फिर वो महापौर बंगला जो आपने हड़प लिया है, वो हर जगह पर आपने करप्शन करके रखा है। तो आप जब सवाल पूछेंगे तो इसका भी एक्सप्लेनेशन लेके जाइए। लेकिन हेमंत कामले साहब ये बताएं, ये जो बीएमसी की बात, अगर जनरली अगर बीएमसी के बारे में देखा जाए, आपको क्या लगता है, मैं एक बड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, पता नहीं कि क्या बीएमसी विल इट एवर बी करप्शन फ्री? क्या मतलब जो करप्शन बीएमसी में, देखिए साहब, कॉर्पोरेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड आर लाइक दैट, वेदर इट इज न्यूयॉर्क, वेदर इट इज मुंबई, वेदर इट इज दिल्ली, हर जगह पर करप्शन है ही, हर कॉर्पोरेशन में। लेकिन बीएमसी में कुछ जरा ज्यादा ही है, हर जगह पे हर लेवल पर है। तो क्या इसको हम कभी भी कंट्रोल कर पाएंगे, हेमंत कामले साहब? देखिए, कंट्रोल करने के लिए पहली बात तो जिनके हाथ में पावर रहेगी, जिनके हाथ में सत्ता रहेगी और जो बीएमसी को लीड करेंगे, उनकी नीयत साफ होनी चाहिए। हमने नासिक में तो एग्जांपल सेट करके दिखाया आपको कि 1600 करोड़ जिस कॉर्पोरेशन का बजट था, हमने तो वहां पर सीएसआर फंड लाकर काम करके दिखाया। यहां पर तो आपके पास पैसे हैं भाई, सिर्फ अच्छा काम करने की या साफ सुथरा काम करने की नीयत होनी चाहिए। अब रोड बजट का तो मैंने आपको बोला कि रोड्स के जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट टेंडर्स डिक्लेयर किए, वो तो मैंने आपको बताया जी कि 15 करोड़ 25 लाख 1 किलोमीटर मीटर का रास्ता बनाने के लिए अगर खर्चा आता है तो 1,52,000 रुपया 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा होता है। ऐसे मुझे लगता है दुनिया में ऐसी कौन सी सड़क होगी या कोई सड़क होगी जिसका बजट इतना होगा या जिसका खर्चा इतना होगा। और इसके बावजूद, इतना पैसा खर्च करने के बावजूद हमें क्या मिलता है? तो सड़क में गड्ढे। आप रास्ते बनाओ, 3 महीने 4 महीने में गड्ढे हो जाते हैं, जबकि इन रोड्स की जो डिफेक्ट एंड लायबिलिटी पीरियड होती है वो करीबन 10 साल होती है। अगर 10 साल की डिफेक्ट एंड लायबिलिटी पीरियड है और उसके बावजूद अगर दूसरे या तीसरे महीने में वहां पर गड्ढे हो जाते हैं, पॉटहोल्स हो जाते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? उन पॉटहोल्स में कोई बाइक वाला अगर मर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है,
तो उसके जो रिलेटिव होते हैं उनको मुआवजा क्या मिलता है, कौन उसके मतलब इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? बीएमसी लेती है, स्टेट गवर्नमेंट लेती है, वहां का कॉर्पोरेटर जो एमएलए वहां कर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं कि ये रास्ता मेरे प्रयत्न से हुआ है, हमारे जो मैंने लेटर लिखा था इसके लिए हुआ है। तो जब ये रास्ता खराब होता है तब वो बोलते हैं कि मैंने ये लेटर लिखा था, ये रास्ता मैंने बनाया, लेकिन रास्ता खराब हो गया है, तो इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आप मुझे कोई भी एक एमएलए बताइए, कोई कॉर्पोरेटर बताइए। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? आप ये एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। 1995 के बाद जब सेना बीजेपी की गवर्नमेंट आई, तब there was an experiment which was tried out over here in BMC which did not last. अब I don't want to go into the reason why it did not last. It was mayor and council. अब आपको क्या लगता है कि BMC में mayor and council होना चाहिए सर? Where at least the bureaucrats will be answerable to the elected members. क्योंकि आज की तारीख में elected members के पास powers क्या हैं? अगर आप देखा जाए BMC में the entire power lies with the bureaucracy. कमले साहब। नहीं, देखिए कैसे है ना राजीव जी, कैसे है ना कि पहले कुछ ऐसे कॉर्पोरेटर्स थे, मैं कुछ लोगों के नाम बता सकता हूँ आपको। राधा कदम थे, दिनकर झारापकर थे, रुस्तम तीरंदाज थे जी। ये लोग जो बजट होता था, बजट का अच्छी तरह स्टडी करते थे, बजट को उसका पोस्टमार्टम करते थे कि भाई हेल्थ में आपने इतना प्रोविजन रखा है, आपने रोड्स के लिए इतना प्रोविजन रखा है, आपने एजुकेशन में इतना प्रोविजन रखा है, और ये रखा है तो ये कैसे गलत है या कैसे सही है, इसका एक पोस्टमार्टम होता था, उसका एक एनालिसिस होता था। आज की तारीख में मैं तो मतलब याद करके या मैं ढूंढकर भी नहीं कोई कॉर्पोरेटर को देख पाता हूँ कि ऐसे कोई कॉर्पोरेटर्स है जिनकी ऐसी कोई स्टडी है या इस तरह की एनालिसिस वो करते हैं। और इसी वजह से जो ब्यूरोक्रेट्स है वो कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी है उन पर हावी हो जाते हैं। और तीसरा एक नेक्सस है जो कॉन्ट्रैक्टर्स, तो कॉन्ट्रैक्टर, ब्यूरोक्रेट्स एंड रूलिंग पार्टी के कुछ चुनिंदा लोग, इनकी जो नेक्सस है, इसकी वजह से ये करप्शन रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसके लिए जरूरी है कि जो पावर में हो उनकी नीयत साफ होनी चाहिए। जब तक उनके हाथ काले ना हो, उनके हाथ जिस दिन काले हो जाएंगे उनका कंट्रोल निकल जाएगा। तो जब तक आपके हाथ काले रहेंगे आप कुछ नहीं है। तो कोयले की दलाली में हाथ काले करेंगे तो ये कभी ये करप्शन रोक पाएंगे ना इस मुंबई को सुधार पाएंगे। कामरा साहब, वी वर डिस्कसिंग, अभी आप आने से पहले नंद कुमार पवार जी थे, एक बहुत डिस्टर्बिंग, बिकॉज आप भी बहुत काम कर चुके हो, एनवायरनमेंट है, मिथेरियल्स है, आज एक गार्बेज डंपिंग ग्राउंड, गार्बेज डिस्पोजल एक खतरनाक लेवल तक पहुंच गया है। वे पूरे इकोलॉजी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, एनवायरनमेंट एक किस कदर डेस्परेट सिचुएशन में है, नो नॉर्म्स आर बीइंग फॉलोड, गार्बेज का कोई सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा है, मैंग्रोव्स पूरे डिस्ट्रॉय हो रहा है। Kamra sahab, you have done a good study on that. How do you see the future? Is the government really concerned? और कैसे मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई अलग अलग जगह को किस प्रकार से बचाया जाए? एनवायरनमेंट जिस प्रकार से खतरनाक तरीके से हुआ है कि पीपल आर रियली सफरिंग, व्हाट डू यू सी अ सॉल्यूशन देयर वेयर बीएमसी इज कंसर्न? बिकॉज़ आपने बोला 52,000 crore बजट, somebody has to do something, some leaders to come out और show the way क्या होना चाहिए। Kamra sahab, what is the future you see? नहीं, मुझे तो पूरा डार्क लगा फ्यूचर जो मुंबई ने, मुझे तो दुनिया का फ्यूचर डार्क लग रहा है। जो पवार साहब को मैंने बहुत अच्छी तरह सुना है, बहुत अच्छा स्टडी है उनका। हमारे साथ बहुत सारे हम रिवर मार्च में काम करते हैं या हमने गार्बेज पर, देखिए ये जो बीएमसी की पॉलिसीज है या बीएमसी के लोग जो पॉलिसी डिजाइन करते हैं, ये डंपिंग ग्राउंड्स के प्रॉब्लम है, रिसाइकलिंग जो इसका होना चाहिए, उसके ये जब तक पॉलिसी डिसाइड नहीं होगी और पॉलिसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, मैं इसकी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा आपको। अब तो रिसाइकल कहाँ करोगे? तो ये सवाल हम कितने बार बीएमसी को पूछ चुके हैं, लेकिन बीएमसी के पास इन सब सवालों पर काम करने के लिए कोई वक्त नहीं है उनके पास। ना उनके पास मैंग्रोव्स पर काम करने के लिए वक्त है, ना उनके पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर काम करने के लिए वक्त है, ना उनके पास जो रास्ते, अच्छे रास्ते हो या पॉटहोल जिसमें नहीं हो ऐसे रास्ते हो, ऐसे किसी काम के लिए जो कंस्ट्रक्टिव काम है
ऐसे काम करने में मतलब मुंबई महानगरपालिका हो, उनके ब्यूरोक्रेट्स हो, और फिर वहां पर चुन के लोग हो, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं. एवरीबडी इज इंटरेस्टेड हाउ टू फेच a large amount from the BMC contract. This is the only agenda for all these people. In fact, Hemant Kamble Saab, just the other day we had Mr. Stalin Dayanand, who's also been working on the Mithi River and on the Yes, RA. जी, उन्होंने कहा कि देखिए साहब, जैसे मिठी रिवर है, मिठी रिवर की जो समस्या है वो कभी भी सॉल्व नहीं होगी. वो इसलिए सॉल्व नहीं होगी क्योंकि बीएमसी जो है, इट ट्रीट्स द मिठी रिवर एज अ कैश काउ, और हर साल उसका क्लीनिंग का बजट आएगा, ये आएगा, वो आएगा, और वो इसी तरीके से चलता जाएगा, और हर एक की जेब जो है वो गर्म होती रहेगी. कामले साहब. राजीव जी, प्रदीप जी, आप तो मिठी के मतलब तीर पर बैठे हुए हैं. बिल्कुल वहीं सर, हर सामने. दिन आते जाते आप देखते हो कि मिठी रिवर की हालत जी. क्या है और किस तरह से उसकी सफाई होती है. 1800 करोड़ रुपया अब तक खर्चा हो चुका है जी. उसकी साफ सफाई पर. देखिए, मैंने बोला, एक बात साफ साफ कहता हूं, नीयत में जब तक खोट है, फिर वो मुंबई महानगर पालिका के चुने हुए लोग हो या जिनके हाथ में जो पावर है बीएमसी की वो हो या ब्यूरोक्रेट्स हो, इन सब के नियत में खोट है. इसलिए मिठी रिवर हो, बोईसर रिवर हो, दहिसर रिवर हो, ओशिरा रिवर हो, कभी साफ नहीं हो पाएगी. अब देखिए, इतना सारा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चलता है. आप देखिए, पूरे मुंबई में कंस्ट्रक्शन चलता है. डेब्रिज जाती कहाँ? मैनग्रोव्स पर. डेब्रिज मैनग्रोव्स में गिरती है, वहां पर लैंड फिलिंग होता है, और फिर वहां पर इलीगल झोपड़े होते हैं. तो आप जितना समुद्र को मतलब जितनी डेब्रिज डालोगे, वहां पर मैनग्रोव्स को खत्म करोगे, तो एक ना एक दिन हमें बहुत बड़ा डिजास्टर देखना ही देखना है. इसके लिए आपने सवाल पूछा प्रदीप जी ने कि आप क्या देखते हो फ्यूचर, तो फ्यूचर मुझे डार्क लग रहा है. और यहाँ पर जो जाने मिट्टी रिवर का सवाल है, वी सी इट एवरी डे. वो ड्रेजिंग मशीन जो है वो इधर से मिट्टी निकालता है या जो कुछ भी निकालता है और इधर डाल देता है, राइट देयर इन फ्रंट ऑफ अस. मतलब बेशर्मी की भी हद होती है. बेशर्मों की जब सरकार होती है ना, तो बेशर्मी की हद होनी ही होनी है. बेशर्मों की सरकार है. जब मैं सिर्फ कॉर्पोरेशन को इसको जिम्मेदार नहीं कहता हूं, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है. स्टेट गवर्नमेंट की उतनी जिम्मेदारी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी उतनी जिम्मेदारी है. जब आप कहते हो कि ये मुंबई शहर जो आज पूरे वर्ल्ड में एक माना हुआ शहर है, इसको हम फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं, तो सेंट्रल का भी उतना ही यहाँ पर ध्यान होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का भी ध्यान होना चाहिए. और जिनके हाथ में ये कॉर्पोरेशन है, उनको तो देखिए, मैंने ना राजीव जी स्पेशली आपके लिए हमारे जो ब्लूप्रिंट है उसकी कॉपी में लेकर आया हूँ. कब मुलाकात होगी तो मैं आपको जरूर दूंगा वो कॉपी. अब देखिए, हमने पूरे डिटेल में काम किया है इस पर कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हम किस तरह से इसका ये कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या उसका रिसाइकल कर सकते हैं, या फिर जो आपके मार्केट है, रास्ते हैं, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है इसको. लेकिन इनके पास कोई इस तरह का डिजाइन मॉडल नहीं है, इसके लिए इनकी प्रॉब्लम है. इनफैक्ट दी विजन डॉक्यूमेंट और जो ब्लूप्रिंट है, आई थिंक एमएनएस इज द ओनली पार्टी or organization, by the way, and this is for our viewers, which actually came out with a credible, workable plan even for hawkers. Hawkers के लिए भी मुंबई शहर में एक credible, workable plan is there in the blueprint. I don't know why. Sir, we have taken almost 7 years to design this yes. Blueprint for the Maharashtra. Okay, so we have spent lots of money, lots of time, and lots of research and development. We have researched on so many points, for education policy, for health policy, on farmers issue, for every issue. तो मुझे लगता है अब के जो यहाँ पर जो भी स्टेट में पावर हो या बीएमसी में हो, सेंटर में, किसी को लोगों के रोजमर्रा के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने में किसी को कोई ये नहीं है दिलचस्पी. लेकिन अभी तो सर क्लियर हो गया होगा ना हेमंत कामले साहब, अब तो लोगों को क्लियर हो गया होगा. माय बेसिक पर्पस ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन अबाउट 2 फाउंडेशन डेज
वॉज एसेंशली कि लोगों को मालूम तो पड़ गया होगा कि व्हाट आर दीज पार्टीज, कि भाई दो दो शिवसेना है, दो दो कांग्रेस है। देखिए ना साहब, एक तरफ कांग्रेस एक तरफ एनसीपी, असल में तो कांग्रेस पार्टी है ना वो, दो दो कांग्रेस दो दो शिवसेना, मतलब सत्ता के लिए आप क्या क्या नहीं करेंगे। सो दी ओनली ऑल्टरनेटिव, सिर्फ एक ही विकल्प है, वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है। आपको लगता है कि लोग अब ऐसा सोचेंगे? जरूर जरूर सोचेंगे। देखिए आप मीडिया, अच्छी तरह मीडिया के हो, मीडिया के फॉलो करते हो। अब जलगांव में पानी के लिए सबसे बड़ा मोर्चा किसने निकाला है? एमएनएस ने निकाला है जी। हम देखिए अभी एजुकेशन पर काम कर रहे हैं, अब एडमिशन शुरू हो जाएंगे जी। बच्चों को एडमिशन करती तकलीफ होगी, उस पर काम कर रहे हैं। तो महानगर पालिका की जितनी प्रॉब्लम्स है कि हॉकर्स के हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर दे चुके हैं कि 150 मीटर्स फ्रॉम द रेलवे स्टेशन यू कांट अलाउ एनी फेरी वाला और हॉकर्स, लेकिन उसको फॉलो कहाँ करते? इस पर भी काम करेंगे हम, वुमेन सिक्योरिटी पे काम करेंगे, बहुत सारे इश्यूज पर हम काम कर रहे हैं। और नियर फ्यूचर मतलब जल्दी आपको इसका जो भी है पिक्चर दिखाई देगा। तो अब ये तो लोगों को सोचना है कि आपके लिए बेटर काम कौन कर सकता है, अच्छा काम कौन कर सकता है, आपके लिए अच्छा विकल्प कौन है। कामरे साहब, आज तो पूरे दिन महाराष्ट्र में सब जगह यही था कि देशद्रोह दिवस, गद्दार दिवस, स्वाभिमान दिवस, और यही मोर्चा धरना प्रदर्शन, इसमें एनसीपी भी भाग लिया, सुप्रिया सुले जी भी भाग लिए, जितेंद्र अवार्ड ने ऑलरेडी भाग ले लिया, अलग अलग जगह पे एनसीपी भी बहुत ज्यादा पूरे देश में रैलीज कर दी, पूरे मुंबई महाराष्ट्र में। तो एज यू सेड, द ग्रेटर इश्यूज आर नॉट बीइंग हैंडल्ड बाय द नॉट इवन द गवर्नमेंट एंड इवन द ऑपोजिशन। दीज आर द बिगेस्ट इश्यूज बिफोर देम। हाउ डू यू सी दैट? प्रदीप जी, एनसीपी ने गद्दार दिवस मतलब जिस तरह से वो सेलिब्रेट कर रहे थे, मेरे समझ में कि बाहर की बात है। जिन्होंने गद्दारी कर कर एनसीपी की स्थापना की, और यहाँ पर खंजर गोपना बोलते हैं ना, जो पीठ में खंजर गोपना, इनसे सर्वे सर्वा तो शरद पवार साहब है। पहली बार उन्होंने तो शुरुआत की। सबके सबसे बड़े महागुरु कौन? तो शरद पवार साहब थे। मतलब लोग कहते हैं उद्धव जी ने कहा, अब तक कितनी बार उद्धव जी ने कहा है यार, लोग जब भी कभी ऐसी बात होती है तो पहले शरद पवार साहब को याद किया जाता है। अब उनकी पार्टी ही गद्दार दिवस या जो भी है वो सेलिब्रेट करती होगी। तो ये मुझे लगता है कि गद्दार दिवस, इसमें आप टाइम स्पेंड मत करिए। देखिए फार्मर, अब जो बरसात जो है, बारिश आगे आगे चल रही है, मानसून प्रोलॉन्ग हो रहा है, तो आपको उस पर काम करना चाहिए। Today is already the 20th of June. I don't think rains are going to come over here till 23rd or 25th. हाँ, तो उसके लिए आपको काम करना चाहिए, उसकी जो भी है प्लानिंग करना चाहिए। भाई अगर लेट बारिश होती है तो क्या करना चाहिए आपको, किसानों को क्या मदद हम दे सकते हैं, अब यहाँ पर पानी की किल्लत हो सकती है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में। ये गद्दार दिवस और उससे लोगों को क्या देना देना। So in effect, the only party which is completely focused on the development of Maharashtra and on people's issues is the महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। मतलब अकेली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ऐसी पार्टी है जिसका फोकस बहुत क्लियर है भाई साहब, केंद्रित है ध्यान सिर्फ एक ही चीज पे, महाराष्ट्र के लोगों का भला कैसे हो और विकास कैसे हो, यानी श्री राज ठाकरे जी की पार्टी। अब ये चीज जो है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप घर घर तक पहुंचाने में आप सफल होंगे, क्योंकि आई रियली वुड लव टू सी यू सक्सीड, वेरी फ्रैंकली। कामले साहब जी जरूर, हमारे जो भी अभी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जगह जगह पर हमारे कैंप्स चल रहे हैं, कार्यकर्ताओं को हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं कि किस तरह से हमें लोगों के पास जाना है। देखिए थाना डिस्ट्रिक्ट हो गया, अब पुणे में शुरू हो रहा है, नासिक में शुरू हो रहा है, मुंबई ऑलरेडी हो गया है। तो हमने हमारे कार्यकर्ताओं को इस तरह के हम ये कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं या प्रशिक्षित कर रहे हैं कि आपको एग्जैक्टली महाराष्ट्र का क्या कौन सा विजन लोगों के सामने रखना है और एक विकल्प के तौर पर हमें लोगों के सामने जाना है। और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं लोगों को अपील जरूर होगा, जिस तरह से ये जो लड़ाइयाँ चल रही है, फिर शिवसेना हो, शिवसेना बीजेपी हो, फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना, फिर उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना, वहां पर कांग्रेस अलग लड़ रही है, कांग्रेस के झगड़े अलग है,
शरद पवार जी के मतलब अजीत दादा कभी रूठ जाते हैं, फिर उनको मनाया जाता है, फिर वो कुछ, तो ये इन सब बातों से मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के जो पब्लिक है, यहाँ की जो जनता है, उनके रोजमर्रा के जीवन में इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनके प्रॉब्लम पर काम करने के लिए इन जो पावर्स में जो लोग हैं या विपक्ष में है, इनके पास कुछ भी वक्त नहीं है। तो मुझे लगता है हम इस पर काम करते रहेंगे। देखिए, हमने अभी वहां पर किसानों के लिए जो लेबोरेटरी टेस्टिंग लैब खोला है, सॉइल सैंपलिंग आपका टेस्ट कर सकते हो। तो इतना थॉट, हमारा जो डीप थॉट है कि भाई किसान हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमने उस शुरुआत वहीं से की है। तो इस तरह के जो भी इश्यूज है, ये हम लोग लेकर आते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। कामरा साहब, ये एक तो है कि जो रोजमर्रा जरूरत है, जन कल्याण, लोगों के हितों की बात है। दूसरा है कि रेजिंग टॉपिक्स, यूनिफॉर्म सिविल कोड, गीता प्रेस को आपने गांधी पीस प्राइज किया, वहां पोलराइजेशन हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे पोलराइजेशन हो गया, सावरकर वाले इशू, हेडगे सावरकर जी इशू, हेडगे वाले इशू, इसमें लगातार लोगों को हिट करना। तो हाउ डू यू सी दिस थिंग्स आर गोइंग टू अफेक्ट द इलेक्शंस, इवन बीएमसी इलेक्शंस विल बी अफेक्टेड बाय दीस फैक्टर्स? ये देखिए, हेडगेवार जी का इशू हो या सावरकर जी का इशू, मुझे लगता है ये इशू तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, जो भी अपोजिशन हो, ये हमेशा इलेक्शन के तौर पर ही, इलेक्शन के दिनों में ये आते हैं। हाँ, जहां तक कॉमन सिविल कोड हो या पॉपुलेशन कंट्रोल बिल हो, इसको मैं हमेशा सपोर्ट करूंगा, हमारी पार्टी भी सपोर्ट करेगी। क्यों? क्योंकि ये देश हित में है। पार्टी कौन सी पावर में, वो मायने नहीं रखता, लेकिन ये दोनों, ये पॉपुलेशन कितनी होगी, कितनी पॉपुलेशन चाहिए, जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी तो हमारे सभी चीजों पर उसका असर करेगा। तो ये पॉपुलेशन कंट्रोल बिल सबसे पहले आना चाहिए। भले कॉमन सिविल कोड आप बाद में लेके आइए, लेकिन ये पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पहले लेके आइए। ये तो सबके लिए लागू रहेगा ना। आपका जो कॉमन सिविल कोड है, इसमें डिस्प्यूट हो सकते हैं, इसमें सब कुछ हो सकता है, या ये डिबेटेबल हो सकता है, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आना मुझे लगता है देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, तो ये आना ही चाहिए। Right, Kamle Saab, thank you very much. Great pleasure talking to you as always, sir. Wonderful to see you Thank you being very much. absolutely clear, very honest, very transparent, and completely and totally realistic about what the MNS plans to do. I hope to God that the people of Maharashtra see that they must give the MNS a chance now. आपने सबको मौका दिया है, अब एक असली पार्टी जो है यार, जो ऑनेस्ट पार्टी है, ईमानदार पार्टी है, उसको तो मौका दो। राइट, थैंक यू सो मच सर, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी सर, थैंक यू, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम सर। Well, at least the MNS has its focus very, very clear. They're not concerned. Even when you talk to Mr. Kamble, he's got a vision. He's Yes, got a vision absolutely. on what he's going to talk and what he's not going to talk. Like when we talk of the bills, he said certain bills, yes, uniform civil code. Just because the politics apart, a vision for the state, a vision for the country, a vision for the corporation, a vision for the Absolutely, society. absolutely. Wonderful. Now, the only thing is that as far as Mr. Raj Thackeray is concerned, let's be very clear, he deserves a chance. That's my opinion anyway. The people of Maharashtra have to decide as to what they need to do. Do we have any comments today? Do we have? All right, let's take a look. ये आपके थोड़े बहुत comments हैं. Let's read them out. We didn't have any yesterday. Let's take a look at some of the comments that have come in. Can we have them on, please? Rahul Gandhi's popularity grows. That was Rahul Pappu, like his father, will be finished off before he raises. I assume he means this gentleman, Raghu Reddy Saab, means rises. Hindus will not tolerate his rise in accession. He is a fraud. So Karnataka, no Hindu voted for the Congress. Anyway, This hardcore BJP voters. US ready to welcome Narendra Modi. Let's take a look. Modi ji is landing tonight. I can't even read this. Can you read this? I can't. For US, Indian, etc., it's too long. All right, can we move on, please? You guys could have at least expanded this. या तो इसको मैग्नीफाई करते या अलग अलग तरीके से करते तो ये भी
This also I can't read at all. I don't know what do you expect me to do We with need this? to have a magnifying glass. sir. Yes. I don't know what you guys expect me to do with this. I can't read anything from this. Move, please. Only saffron will rule for another 50 years. Congress waste useless. Mukt Bharat. Sundaram Kumar. Right. I can read that. जी आगे बढ़ें अगर कोई है तो. Congress appeasing 20-30% Muslims, BJP appeasing 70 to 80% Hindus. I think that just about says it all. Yes. Right. So we got two parties. That is what everybody would love to have. Two parties Facing each other. Facing so each other. Finally, Mr. Advani's dream of a two-party system Yes, exactly. is coming true. Right. I tell you what. Yesterday was the foundation day of the Shiv Sena. I know we should have carried this yesterday. इसको हमें कल कैरी करना चाहिए था प्रदीप जी. आज कैरी कर लेते हैं with your permission. Yes. प्रदीप जी, this is my very old interview with Bala Saheb Thackeray. It's a classic interview. Wow. I loved that It's interview. fantastic. Yes. I would love to show it to our new viewers again. This is the interview where Bala Saheb Thackeray has never spoken like this before. So we leave you with a classic interview. And it's the right day actually to show this जी. interview. जहाँ पर Because दो it's a rare masterpiece. दो शिवसेना हो गई हैं. Let's hear Bala Saheb Thackeray, my dear friend, my most respected friend, and well, I don't know what he would think or what has happened to his party. I'm sure he would not be happy at all. मुझे नहीं लगता कि बाला साहब ठाकरे आज खुश होंगे जहाँ पर भी वो हैं. Let's take a look. पूछना सर आपसे ये है कि अभी तक हर समय जब भी चुनाव होते थे ये देखा जाता था कि एक चुनाव को छोड़ करके बाकी हर एक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना जो प्री पोल सर्वेज होते हैं उसमें महाराष्ट्र में हमेशा जरा पीछे दिखाई जाती है एक चुनाव को छोड़ करके. इस बार यू आर सो फार अहेड दैट इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द कांग्रेस टू कैच अप, ऐसा लोगों का मानना है. तो इससे कहीं ऐसा तो नहीं है कि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के जितने वर्कर्स हैं उनमें देयर विल बी अ सेंस ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, अ सेंस ऑफ लेथार्जी on their part? on their part? As far as I'm concerned, I don't believe in those poll strategies and whatever reports they publish in their newspapers. And you can have the taste of the pudding last time. What they publish and what happened, particularly those 4 states. That's right. Even BJP people never had an idea that they will win in 3 states and they will lose only Delhi, that's all. Perhaps it may be due to Khurana. If that would have been a good model, I think Sheila Dixit's position would have been difficult. खैर वो हो गई बात गई चले. तो ये अंदाज किया था 4 स्टेट का. जी. बस क्या हो गया? कुछ नहीं. It was exactly the opposite side. Or what the pre-polls had predicted. Yes. What the poll analysis. People just vote. They cast their vote. The prediction that there are so many astrologers nowadays today in newspaper offices, and they have got their own horoscopes and whatnot of each party. So sometimes, most of the times I can say that things go wrong, and as it has already gone wrong as far as the 4 states were concerned. In the state of Maharashtra, Yes. what do you think will happen? I think yesterday Uddhav had gone to Nagar, Ji. and you will not believe so much the Maidan was packed to capacity. Manoj Doshi was surprised because usually it is my monopoly to Gather so many crowds. Yes, That's right. even today of course. But Uddhav was also equally surprised. How's that? So many people attended. Pin drop silence. You see? As happens in your It was meetings. not Congress Jatra. As happens in your meetings. Of course, yes.
Pin drop silence. I mean, they say that when you address a meeting, you're like a rock star. Applause and laughs and everything. So you taught Uddhav all that? Or? No. Or you just learned it on I the don't have any institute in my house where I teach my boys or my Gharana people that they have to become this. No. There is no Thakre Gharana. Absolutely not. No, I don't believe in that kind. I've watched you in Shivaji Park. I watched you address so many meetings. Yes. Unknown to you. I've actually sat in the crowd. I don't know. I've actually sat in the crowd. And I've watched you deliberately stop in mid-sentence. And even though the entire Maidan is completely full, you can actually hear a pin drop. Pin drop. That's right. How do you manage that? That pause is automatically there because that is a reaction of the public, the audience. And I always test. And they make me stop for a while. Let us breathe a little and then go ahead with the thing. Yes. So tell us, I mean, this is something that I've always wanted to ask you. You were a cartoonist. Yes. You still are. You still can draw. My profession remains, but I don't draw nowadays because I'm not getting good models nowadays. All right. For my caricature. So we'll come to that. But tell me, how did you, where did you learn this from? Did you get it by instinct? Did you get it by practice? कि इस तरीके से public meetings को address करना, इस तरीके से जिसको कहा जाता है जनता को मंत्रमुग्ध रखना? That's my father is responsible for all of these things. Even we were staying there at Bhiwandi, and from Bhiwandi, when the Second World War started, we shifted to Mumbai in somewhere in 1938-39. 38-39 में आप यहाँ पर? Yes. जी. और हम जब भी स्थलांतरित हो गए यहाँ मुंबई में, तो मेरी माँ की एक इच्छा तमन्ना थी कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट बनूं. And my father was deadly against government servants. He said, no, you can be a dacoit, you can be a gangster, whatever you want. Don't become a clerk. That was his thing. But ऐसी कोई बात नहीं थी. He wanted me to be a musician. A musician? Musician. He brought bulbul, that old instrument. That's right. टाइपराइटर जैसा होता है, इधर ये तार छेड़ना और इधर दबाना, वो कीज. When he brought, he asked me to sit before him. I sat. He said, take this small cellulite thing and remove here and then press this. So when I used to start here, this hand never used to move. When I used to move this hand, nothing happens here. So he got wild, I said. जाओ, जोर से हाथ करके उन्होंने हिलाया, मगर वो सब तार मेरे इधर घुस गई रिस में, तो थोड़ा खून भी आ गया. मैं खून से नहीं डरता हूँ, लेकिन ये क्या है, तो थोड़ा बच्चा था, थोड़ा रोना शुरू किया. जाओ तुम जाओ, ये नहीं सीखेगा. पिताजी मुंबई में आते जाते करते थे, Mumbai, like that. But then one day he found, when he came to Bhiwandi, he found some tunes, something is coming from one room, side by room. So उन्होंने मेरी माँ को पूछा, ये क्या है, कौन बजाता है? तो श्रीकांत, we used to call him Shri, वो बजा रहे हैं. अच्छा, बुलाने के बाद वो भी डर गया था. मेरे पिताजी तो जबरदग्नि थे बिल्कुल, बड़े तेज. तू बजा रहे हैं? तो हाँ, बैठो. एंड देन ही स्टार्टेड सेइंग सम ट्यून्स और सम कोई तबला जैसा होता है ना, राधिक तातिक तक, और ट्यून्स उन्होंने निकले. एंड ही प्लेड. द फर्स्ट सॉन्ग इज ऑलवेज दोज हु लर्न दिस इंस्ट्रूमेंट्स दैट टाइम, जाके मथुरा या कान्हा. ये पहला गाना शुरू से होता है. तो कान्हा क्या, मथुरा किधर, पता नहीं. तो ये हो गया, तो उनको पता लगा कि ये म्यूजिशियन होने वाला है. नहीं, वो हो गया अभी दुर्भाग्य से वो गुजर गए जी, श्रीकांत जी. बट ही वॉज अ टॉप मैन, a terrific musician. He sang about 11 to 12 Marathi songs from Muhammad Rafi. Yes.
He had a Urdu knowledge. He used to write Urdu wonderfully nice, good handwriting. खैर वो हो गया. So तो मेरा क्या होगा? वो तो चिंता थी. जी. मैं पिक्चर निकलता था कभी कागजात पर, कभी दीवार पर, तो देखा पिताजी ने. जब हम मुंबई आए तो Banbury's cartoons used to appear in Times of India at the time during Second World War. I got the collection. तो अंग्रेजी तो आती नहीं, मगर देखता तो रहते हैं. तो पिताजी ने कहा, यू वॉच, क्या है, कैसा लगा, ठीक किया, पसंद है, तो हमेशा मैं ऑफिस से आऊँगा, तभी जैसा निकाला है वैसा निकाल के रखो, पेंसिल ड्राइंग. मैंने कहा कि ठीक है. जब ये आते थे, उस वक्त हम मुंबई आए थे, तो उन्होंने पूछा क्या आज कुछ किया है क्या, स्केचिंग वगैरह, तो बोला हाँ, बताते थे. देन ही विल कॉल फॉर द टाइम्स कॉपी एंड पुट दैट माय स्केच बिफोर हिम. ये कैसा लाइन गया, तुमने कैसा किया, तुमने ये कैसा किया, ये कैसा, आँख कैसा, ये करके करके उन्होंने मेरी पढ़ाई शुरू की. करने के बाद एक दिन उन्होंने इंक एंड ब्रश लाया. उन्होंने कहा अभी इससे शुरुआत करो. You remember the brush or? हम दो that there were no Winston Newton and all kinds of things, you know, they were very costly things. In today's they are worse costly. But I started inking the thing. पहले जमता नहीं था, कभी ज़्यादा इंक आती थी, कभी कम पड़ती थी, सब करके करके I developed as a cartoonist then. But how did you learn how to speak? How did you learn how to That is address people? that instinct, I can say. That is my father. I used to listen to all people like my father, Comrade Dange, Acharya Atre. All these were my say icons or idols and whatnot. You know. But as a young man, you were a very rebellious young man. You're still a rebellious young man, of course. But No, when you were younger, you were rebellious. You were even more rebellious. I have been forced to become a rebellion. I was not. I was. You never conformed. Like you said, your mother wanted you to become a government servant. No astrologer would have predicted that though I am a cartoonist, my profession will change into this. Neither I knew it. No, I did not. The sudden change. So how did that come about? I joined Free Press as a contributor in 1945. Then I left. Then again I joined in 47. But somehow I did not like that tendency, attitude. Mr. Sadanand, they were giants. Sadanand, Horniman, Relvi, all these people. That's right. And now there are no such journalists in today's field. That those ethics have also gone, in fact. So he will ask me to sit in that corner. That is your corner. I said, okay. He will change the furniture in night's time. Then he will make his cabin there, and he will ask other people to shift over there, and so on and so on. Every day, in a week, twice or thrice. So I had that thing. But the chap was called Mitra, nasty fellow, but साधारण का आदमी. वो ऐसे करते थे कि मुझे बताया वहाँ बैठने को, तो भी he will put me in telephone operators thing, my table and everything, and to read newspaper and concentrate and then cut, yes, hello, hold on, क्या है? तो मुझे गुस्सा आ गया. मैंने कहा कि मित्र ये जगह ठीक नहीं. नो बट यू नो हाउ व्हाट कैन आई डू, देयर इज नो अदर प्लेस. मतलब वेयर दैट सदानंद टोल्ड मी, वे सदानंद ने कहा है कि यहाँ बैठने को, तो आप मुझे हिलाते क्यों यहाँ से उधर? नहीं, नो डोंट आस्क मी दैट. मतलब ओके. आई रिजाइन इन 47 I was there. Lakshman came the same year in 1947. He was there. We were two cartoonists.
But somehow in 50 I left. 1950. But it's amazing, really, that you can still talk in such glowing terms about Sadanand, in spite of the fact that he was unfair to you. I said, these people were giants. Today we see pygmies only. छोटे-छोटे लोग. तो बाला साहब ये बताएं कि आप, because this is amazing, I mean really, because Sadanand was never nice to you from whatever I've read. He was never nice to you. In spite of that, you are praising him. In spite of that, I have never heard you say a nasty word against him. I can cite one incident, whether it was good or bad. 2 years, 1952, I was doing freelance. First there in Film India, at that time it was Film India, Babura Patel's. That's right. I started drawing cartoons in that in Film magazine. India? Yes. Babura used to come to our house there at Dadar. Another institution? Yes. Terrific man. I mean, he was also a great journalist with a simple English. No idioms and phrases and nothing. No frills. Absolutely. See the language. Even Sadanand, his editorials were just one line. And very well thought out, very articulate. Absolutely. Ji. Very much. Ji. 52, early in the morning at 8:30 or so, bell rang, doorbell. My father opened the door, said, "Thakre साहब है?" The driver asked my father. हाँ क्या है? वो सदानंद साहब आए हैं. जब भी सदानंद का नाम लिया तो पिताजी को पता लगा कि मेरे लिए आए होंगे, उसका क्या है संबंध. तो उन्होंने मुझे कहा कि सदानंद आए हैं, देखो क्या है. तो मैंने ड्राइवर को पूछा कि अरे साहब को अंदर तो ले आइए. साहब वो बीमार है. Then I went out. He kept the car, that right side of the car door open. His daughter Uma was there. He was sitting in the middle, and then one seat was vacant. You can call it a reserve seat for me. So he cut my hand and pulled me in. Sit. What are you doing? I'm doing my freelance work. How much you get? There's no limit actually. Sometimes I get more, sometimes I don't. You see, I have become old now. You are the pioneer of my institute. And at this age, if you are not going to help me, stand with me, then what's the use of that? Sir, anything you want to say, please. How much you want? The money is not a problem. Anything you give, I will accept. 500, 600. Sir, I am not going to bargain with you. I will just, okay, you come tomorrow to Taj Hotel. Because I am not staying there at Pedder Road. Today it is Dr. Deshmukh Marg, that is Pedder Road old time. मैंने कहा कि ठीक है, मैं आता हूँ. My room number is so and so and so and so. I went there at about 9:30. Ji. At that time, these elements were not there, tummy problem and all this. I went there, I rang the bell. Baba, his son, opened the door, Prem Kumar. Yes, Mr. Thackeray. I have come to see your Pitaji, your dad. No. Doctors have not allowed him to see anybody, no visitors, please. The board was there on the door. ठीक है. So tell him I came and gone. It was my courtesy visit. That's all. Okay. Turn my back. I was about to go out in the passage. He shouted, Sadanand. He heard my voice. Baba, who's that? Thackeray. No, call him in. Baba came running and said, Thackeray, Mr. My dad wants to see you. I went in. Good morning, sir. Namaskar. Sit down here. How much you want? Hello, sir.
I'll give you 600. Sir, I leave it to you totally. You decide anything, I will accept, just because of you, sir. Now, the management is changed. So you have to meet one Mr. A.B. Nair, the man who was the managing director of that Free Press Group of India, that publicity, associated publicity. Yes, that Sadanand started. The Karnani group from Calcutta, they taken over that thing. They had more shares than Sadanand. And then I went to see one Mr. D.N. Nadkarni. He was the oldest friend, right from 45, because he was the oldest even in Free Press Group. And Sadanand's most trusted person. बहुत ही विश्वास इस पर. जो कुछ करना है वो नाडकर्नी से कहो, जाके बोल दो. I went, Nadkarni took me to A.B. Nair, the man who had got that Nair's colony at Juhu. Yeah. That one, that Nair. He did not know anything, any ABC of journalism, but though he was AB and no ABC of my journalism. But managing director, good morning, sir. Then Nadkarni introduced him to me, Mr. Thackeray. Yes, Mr. Thackeray. You are Mr. Thackeray? Yes, I have been introduced as Mr. Thackeray to you by Mr. Sadanand. Oh, please sit down. You know, we have a problem. We don't pay so much salary to anybody. Mr. M.V. Kamath, now Our MP Kamath. Yes, he has got all grey hair. M.V. Kamath is The chairman of Prasar Bharati. Oh, Prasar Bharati, and then UNO and all kinds of That's things right. after that. He said, even we don't pay M.V. Kamath that much salary. I said, sir, I have not come here to discuss salary, my salary with you. And neither I'm interested how much everybody is getting. If Sadanand requested me, and I have come. And he fixed my salary 600. Now, any problem is there, either you talk to Mr. Nadkarni or straight to Mr. Sadanand, and they will solve the problem. When are you going to join? Tomorrow. Okay. I'll speak to Mr. Nadkarni. I left the chamber, came back to Nadkarni. They said, अरे छोड़ो ते बाबा, तुम्ही कशाला परवा करता? मी बाहेर मी बघतो. बरं बघा. ते झालं सगळं. I joined Free Press Journal. Up to 52 to 59, I was there. Lakshman left in 53. That's right. No, 49, sorry, 49. Lakshman worked over there for 2 years. 49, That's right. he left. After that, I left. No, I immediately in 50, I left. 50 to 52, I was doing freelance. 52 to 59, I was with Free Press Journal. Then suddenly, when this man started becoming more active, A.B. Mr. Nair, A.B. Nair. Hare Haran was the editor. So, they made a rule, even my rough sketches, cartoons, unless and until managing director censors that, only then I have to ink it and finalize the thing. Even your rough sketches. Rough sketches. So you experienced the emergency before the emergency. No, emergency came in 50, It 75. came in 75. Yes. So you experienced censorship Oh, even at that time, months before yes. that. But what I did, तो मैंने मेरा कार्टून हो गया स्केच, पेंसिल स्केच. I called Muddu. He was Sadanand's peon. He became automatically his peon also. Muddu, ये साहब को बताओ. I do cartoon on SK Patil. मुद्दू के साहब बुला रहे हैं आपको. So I went. Good morning. Good mornings. Please sit down, as usual. Mr. Thackeray, do you know Mr. S.K. Patil? Yes, sir, I don't know. Only I know that much thing that he's a politician, he's
आई हैव नॉट सीन हिम पर्सनली. मैं इतना ही मानता हूँ कि वो एक कोई राजकारणी पुरुष है. And whenever I get some news, I draw. No, he is a very good man. I will introduce to you one day. It's all right. But don't touch SK Patil. I came back with my sketch. Then I do a cartoon on Minu Masani. I was called again in. Good morning and sit down and all kinds of things. Yes, sir. क्या है? Do you know Mr. Minu Masani? Sir, as I told you long back, last time, कि किसी की भी मेरी पहचान नहीं है. वो अखबार में जब भी उनकी कुछ बातें आती हैं तो उस पर मैं कार्टून निकालता हूँ. If that suits me. Very, very good man, and I will introduce you to you some same old thing. I was really fed up. गुस्सा आ गया. I came back. I called मुत्तू को बोला टाइपिस्ट को बुलाओ. He called टाइपिस्ट. मतलब मेरा रेसिग्नेशन टाइप करके ले आना. Why? I want to resign. I don't want to stay here. I typed the resignation. My signature went to Nair. And then editor, Mr. Hariharan, called me. Yes. Hey, what is this? You gone mad? But if I, sir, remain here, I may go mad. I may become mad, I said, at least. No, I am not going to. You accept or reject or tear it off. I am going. I just took my bag and came home. And they couldn't change your mind? No. So nobody's been ever able to change your mind since then? No. Though I have a mind, but nobody changed. So nobody's been able to change your mind? Nobody can. Once I take the decision, not like your Sharad Pawar. शरद पवार जी अपना मन बदल लेते हैं बार-बार? शरद पवार जी, मेरा मन? अपना मन उनका? जी. काफी टाइम. I mean, not once. यही जो नई बात करनी हो तो ये that is a wrong thing. He did not leave Congress. He has been kicked out from Congress because when he saw after the election Sonia Gandhi going to the Rashtrapati जी. and कुछ गड़बड़ हो जाएगी, she will become the president. तो मेरा क्या होगा? यानी उनका. And he immediately declared that we will not allow a foreign lady or any foreigner to become the prime minister of this country. Okay. When she heard, उन्होंने निकाल दिया. ये शरद पवार, संगमा और तारिक अनवर जी. इन लोग को निकाल दिया. छोड़ा नहीं, निकाल दिया. मगर हमेशा प्रचार किया जाता है कि उन्होंने खुद छोड़ दिया. नहीं, हिम्मत नहीं उसकी. जी. फिर भी वो ये कहते हैं कि क्योंकि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ गई राष्ट्रपति को मिलने के लिए और उनको नहीं लेके गई तो इसलिए उन्होंने छोड़ दिया. उनका आपस की बात है. मैं क्यों निपुण इसमें? ये बात ये नहीं. क्यों नहीं, क्या नहीं, वजह क्या, वो छोड़ दीजिए बात. लेकिन ये हो गया. When you declare one thing and today you are going back to Sonia Gandhi, वो भी पाँव से चल के उनके बंगले पर गई. वो भी घुटन पर चलते चलते उधर गया. और जो उन्होंने बात कही कि हमारा जो मैनिफेस्टो है इसमें विदेशी मुद्दा नहीं आएगा जी. मगर हमने विदेशी मुद्दा छोड़ा नहीं. ऐसे after remaining so many years in politics, I don't know the exact meaning of this, what he wants to say. Whether after election he is going to say the same thing, repeat the same thing, or it is forever, as far as the manifesto is concerned. What is the truth? इससे पहले he was having some kind of a understanding with BJP. काफ़ी वहाँ उठबस चल रही थी दिल्ली में.
आडवाणी से मिलो, महाजन से मिलो, इससे मिलो। मैंने देखा कि आज तक हमने इतनी गालियां दी उनको, बहुत गालियां दी, और इतनी गालियां देने के बाद वापस उनके साथ बैठूं। कल चुनाव आने वाला है जी। लोग क्या कहेंगे? अरे आज ये बात है, दोनों साथ मंच पर, तो गालियां क्यों दी? ये कैसा है? मेरा जो विश्वास है, लोगों का मेरा पर विश्वास है, वो उड़ जाएगा, उड़ जाए। वो नहीं, मैं संभालता हूँ दो चीज़ें, ये तत्व और सत्व, दोनों को मैं कभी नहीं छोड़ा, ना छोड़ूंगा जी, कभी नहीं। बहुत कड़क रहा हूँ इसमें। तो मैंने कहा कि ये नहीं हो सकेगा, और करना है तो चलो, ये लखोबा जो है भुजबड़, उसको निकाल दो। आप वैसे कहें तो मैं कहूँ, आई वांट शरद पवार इन द ट्राइब, एक्चुअली आई वांट वेरी मच, आई वांट इट, क्योंकि इफ ही वुड हैव जॉइन अस, शिवसेना एंड बीजेपी, he would have been fully exposed. You see, fully. How? You were attacking us that we are secularist, we are, हम धर्मांध है, हम जात्यंध है, हम जात्यवादी हैं. जी, that you are communal. Now you are coming with us. That's right. So what happened to your, what you said, uttered earlier? चला गया. But because I put that one condition, which I was absolutely sure this will never take place, and this so-called alliance which they wanted with Sharad Pawar will break, and it has broken. But very strange, the BJP actually approached you and said that they wanted this alliance, which is very strange. Their idea was that they wanted a strongest government in Maharashtra. ये जो पार्टी मिलके जी, वाजपेयी साहब को कितनी तकलीफ होती थी, मगर वेरी स्किलफुली हैंडल. That's right. Skillfully handle, you know. But then so did your chief ministers here when 4.5 साल जब It is आपकी not a सरकार question चली. of support निकाल देते तो गवर्नमेंट गिर जाती. जी, ये तुम्हारी डेमोक्रेसी है. आज कितने के लोगों को संभालना, कितने का मूड संभालना, कैसे टिकना, ये झंझट कौन करेगा हमेशा, हर दिन हर वक्त. अरे नहीं बाबा जाओ जाओ जाओ, अरे नहीं बाबा जाओ जाओ, तुमको ये सीट जगह देते, तुमको ये बनाता है, तो उसको. लेकिन महाराष्ट्र में अभी भी करना तो वही पड़ेगा, क्योंकि एडजस्टमेंट तो करनी ही पड़ेगी. अभी ये तो काल ही ऐसा आ गया है. जी, Today we are facing the same thing. There will be no one umbrella government in anywhere actually, except certain regional states like Andhra, Tamil Nadu. You know, बस बाकी क्या है. बाला साहब ये बताएं कि जब पिछली बार आपकी सरकार आई थी तब आपने ये कहा था, मुझे याद है, और चुनाव प्रचार के दौरान भी कहा था कि जो 5 एसेंशियल कमोडिटीज हैं उसका दाम आप बिल्कुल कांस्टेंट रखेंगे, और काफी हद तक उसमें सफलता मिली यूपी सरकार को. इस बार कोई ऐसा मुद्दा आप सामने ला रहे हैं जहां तक के विकास का सवाल है, डेवलपमेंट का सवाल है? एक तेलगी है, बस हो गया. कितना तेल चाहते हैं आपको? एक तेलगी बस. आपको लगता है कि सिर्फ तेलगी की वजह से ही कांग्रेस और एनसीपी की सरकार उड़ जाएगी और कांग्रेस एनसीपी वापस नहीं आएगी? It will be difficult for them to face that bomb shelling. आज बाबा साहब ने कहा है कि वो ये भी लोग शामिल थे. जी, अरे है, मैं तो नहीं, कभी नहीं, ऐसी बातें तो मैं कभी नहीं करता हूँ किसी के साथ भी, ना किया ना करूँगा. मानो कि हमारे राणे हो, मुंडे हो, और कोई हो, मैंने तो मुलाकात में मैंने कहा है कि फांसी के फंदे पर चढ़ा दो उनको, मैंने ये करूँगा. भले ही मुंडे साहब या राणे साहब. To have a photograph with anybody, Yes. any gangsters or a dacoit or even a man like a Telgi, that is not an evidence as such. कि देखो ये तेलगी का है, ऐसे कहें तो पवार साहब का भी तेलगी के साथ फोटो है. अभी क्या जी. करें, क्या करें? Can he answer that? Can he challenge that photograph? नहीं, फोटोग्राफ का होना तो कोई एविडेंस होती नहीं है, वो तो पब्लिक मीटिंग, पब्लिक लाइफ, You meet so everybody. many people That's right. come and garland you. That's right. You know,
That doesn't mean that I belong to them or he belong to me. But the fact is that as far as the NCP is concerned, specifically the NCP, कांग्रेस के लोग इतना नहीं बोल रहे, लेकिन जहां तक NCP का सवाल है, उनका अटैक यही हो रहा है कि तेलगी मामला जो शुरू हुआ, जो स्कैम शुरू हुआ, वो शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान शुरू हुआ। वो उनका ये कहना है। ठीक है, जवाब ये है इसका, कहां से शुरू होगा ये मामला? एक अनिल गोटे नाम का यह है एमएलए जी, उनकी कोई तेलगी के साथ दोस्ती होगी ना होगी, बट ही वॉज एन इंडिपेंडेंट। और हमारे साथ वो लड़ा चुनाव में, हम हारे और जीता, and he became the MLA। कोई जब भी तुम्हारे पार्टी में आते हैं तो एक बोझ आता है थोड़ा तो, एंड इफ ही रिक्वेस्ट कि ये मेरा दोस्त है, उसका एक ये काम है, और उनके खातिर वो सिग्नेचर करके और कोई मान्यता देते हैं। इनमें से ये तो नहीं कि तेलगी का पैसा लिया और खाया, जैसा कोई अशोक चौहान का भी नाम आता है जी, इसी शंकरराव चौहान के लड़का, ऐसे तो नाम आते रहेंगे। मगर इसमें हमारे से ये मामला शुरू हो गया, हमने शुरू किया, ये युवती ने शुरू किया, ये झूठ है। लेकिन उसमें अभी विलास राव देशमुख का नाम है जी, रेवेन्यू मिनिस्टर वो थे। हाँ, जब उन्होंने उनको जब परमिशन जो दी, तो स्टैम्प पेपर वेंडिंग की जो परमिशन मिली, आना दो ना सब चीजें बाहर, क्यों नहीं लाते? इट वॉज आई हु शाउटेड दैट कि इधर ये क्यों कर रहे हैं, अब तलाशी क्या चल रही है इधर? पहले वहां जाओ, ये तुम्हारे सिक्योरिटी प्रेस जो है जी नासिक में, वहां जाके देखो ये मशीनें कैसी बाहर आई हैं। द रूल इज, इट इज अ वेरी स्ट्रिक्ट रूल, व्हेन यू वांट टू डिस्कार्ड एनी मशीन, you cannot auction it, sell it, you have to melt it. You have to destroy it completely. Not destroy, but melt it. That's right. Not a small thing goes. Here the machine and the dyes and everything gone. That's right. Including the paper. So who is responsible? Sub. Here they say the responsibility also lies with the Union Finance Ministry. इनका तो government था और है भी आज. They also say with the Union Finance Ministry. Okay, that comes under the Finance Ministry in Delhi. करो ना, करो पूछताछ। मैं क्यों ये करूँ आपको? कि नहीं मत जाओ, उससे ना हमारा आदमी जरा, या हम ये नंगे हो जाएंगे, ऐसे तो कोई बात नहीं। I am least concerned and bothered about this Delhi affair. तो यानी बाला साहब जो आप बोल रहे हैं उससे लग तो ये रहा है कि जिस तरीके से बोफोर्स मामले के बाद राजीव गांधी की सरकार गिर गई थी और वीपी सिंह की सरकार बनी, आपको ये लग रहा है कि तेलगी की वजह से कांग्रेस और एनसीपी का सफाया हो जाएगा महाराष्ट्र से? इनके सफाई के कारण काफ़ी हैं, बहुत ही हैं। अभी टू स्टार्ट विथ सीबीआई क्या करती है, और हमारे कोर्ट के मामले होते हैं जी। अभी बॉम्ब विस्फोट की जो बात है, केस है, बाबरी मस्जिद के केस थी जी, आज 12 साल वो इसमें गिर पड़ी है, पहले कोर्ट में फैसला नहीं होता है। व्हेन एवरीथिंग इज सबमिटेड टू यू, मोस्ट ऑल द एविडेंस इज फ्रॉम हिंदूज एंड मुस्लिम्स, व्हाई डोंट यू टेक द डिसीजन कि नहीं भाई वो इनका मजबूत है, ये कहते हैं वो ठीक है, इसके वो मस्जिद ही थी, राम मंदिर नहीं था, और वो कहते हैं हिंदू कि यस राम मंदिर वॉज देयर, हियर आर सर्टन पार्ट्स एक्चुअली, और पुराने कोई चीज़ें मिली है, तो ये हिंदू मंदिर था, इसके ऊपर बाबरी आ गई। कुछ कहो ना जी, चाहे इनके फेवर में न्याय जाएगा या हिंदुओं के फेवर में का न्याय जाएगा, मत देव तो देना, कोई नतीजा तो आना चाहिए, फैसला भी आना चाहिए सामने। 12 साल इसके वजह से सब बिगाड़ा होता है। नाउ वी डोंट नो वेदर दिस मैटर बाबरी मस्जिद इज ए पॉलिटिकल मैटर और ए रिलीजियस मैटर, नॉट आंसर्ड बाय एनीबॉडी, यू नो। फर्स्ट इट वाज डिस्कस इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के बाद नरसिम्हा राव ने कहा खटमल हमारे कंधे पर क्यों डाल दिया, उसके कंधे पर, कोर्ट के कंधे पर बस। So what would you like done over there? I said it once, but now I don't. I want Ram Mandir there. I will now insist that it should be there then. If they are not prepared to take any cognizance of that,
which should have solved the problem. And the idea was, किसी को जगह मत देना. हिंदू को एक अधिकार है मंदिर का, because it is a rightful demand of Hindus that हमारे राम मंदिर पर है. Then there is a मंदिर there. That's right. Last 55 years, Muslim did not go there and had नमाज पढ़ा भी नहीं हुआ वहाँ उस जगह पर. क्यों नहीं? और 55 साल से वहाँ पे आरती हो रही थी. आरती को जी. और पहला ताला लगाया था और राजीव गांधी ने खोल दिया और पूरी शुरुआत होगी. जी. ये तो साबित होता है जी कि हिंदुओं का है. पुजारी भी बैठते हैं उधर. तो हिंदुओं को एक जगह मंदिर के लिए उधर दो. मुसलमानों को देना है तो कहीं और दूसरी जगह पर दो. और जो बात रही द कंट्रोवर्शियल स्पॉट जी और जमीन, उस जमीन पर एक नेशनल पार्क बना दो. नेशनल पार्क. और वो पार्क का नाम होगा मंगल पांडे. मंगल पांडे पार्क. मंगल पांडे पहला शहीद जी आजादी 1857 के गदर का जो पहला जिसने 1857 जी first he shot the first bullet of your independence. That's right. Freedom on a Britisher. इसका नाम दे दे मंगल पांडे. That was your proposal, I still remember. I Yes, gave it about That's right. 10 years back. correct. But nothing was done. No. ये है democracy. No justice, democracy. But sir, as far as I often tell people, जाति पाति तो मैं नहीं मानता हूँ. जितने लोग मेरे उम्मीदवार के हिस्से से आते हैं, किसी को भी मैं जात नहीं पूछता होगा किस कहूँ का क्या किस जात तेरी. ठीक है. मैंने कहा कि a time was there that we used to cast our vote. We used to cast our vote. And time has changed. Now you have to vote for a caste. now you have to vote for a caste. Yes. That's the difference in the time between two zamanas. At that time, no casteism. Can we ask you to reply on this in case you are willing to do so? What? Who will be your chief minister when you come to power in Maharashtra? मैं खेल नहीं खेलता. काफी लोगों को they're dropping saliva of that. Sir, since we really are running out of time, I know you have another meeting. Chief ministership किसी की monopoly नहीं होती है. Correct. I want a man who will do justice to the people, those who get you elected in power. I want that first. लोगों का विश्वास मत करो, विश्वासघात मत करो. जी. Yes. Don't stab in their back. बड़ा साहब, अभी तक आपने शुरू से यही कहा है और आपका स्टैंड बिल्कुल कंसिस्टेंट रहा है. हाँ, बिल्कुल. हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जहां तक रिलेशनशिप का सवाल है, अभी क्रिकेट टीम वहां खेल रही है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहना, जाए तो सही. एक जीता एक हारा एक जीता. चलो हार जीत तो ठीक होती है, जैसे कि चुनाव में होती है. कभी आप बैठे, आपके सर पर हम बैठे, हमारे सर पर आप आए, तो क्या चलता है. अभी कोई नहीं तो गोविंदा को बुलाते हैं. अरे गोविंदा आके हंडी तोड़ साला फोड़. राम नायक के खिलाफ गोविंदा. हाँ, आला रे आला. और न जाने किसी और के खिलाफ कौन कौन, पता नहीं. तो ये जो बात है क्रिकेट की, मैंने जब भी वो जाहिर किया, इट वॉज इन 1992, हमने वो वानखेड़े स्टेडियम की पिच जो है वो पिच जो विकेट है वो उखाड़ दिया हमारे शिव सैनिकों ने. मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उस वक्त. उन्होंने सवाल पूछा कि आपके शिव सैनिकों ने वो वानखेड़े स्टेडियम. नेक्स्ट डे द मैच वॉज टू बी प्लेड बिटवीन हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान. नेक्स्ट डे खेलना नहीं. उन्होंने खोद के डीजल ऑयल डाल दिया, जो कि उसको रन्स निकालने में जल्दी जरा स्पीड में आएगा, इसलिए डीजल ऑयल दिया. इतना तो हमारे शिव सैनिक करते हैं. इसी तरीके से एक बार दिल्ली में भी पिच खोदी. दिल्ली में कोटला ग्राउंड खोद दिया, जिसकी वजह से अनिल कुंबले को 10 विकेट मिली सर. यस, एक इनिंग्स में. हाँ. It was only Jyoti Basu who called that team and had a match there at Eden Garden. Yes,
बाकी मैं नहीं, कभी नहीं. Are you still sticking to your stand then? That Yes, my stand is there. Pakistan should not play in India? No, no. It's unless and until they stop that Kargil thing, mischief, and this terrorism in the country, the network, ISI and SIMI and Toiba, Taliban, nothing doing. जो विस्फोट होते हैं बीच में, जी, कितने लोग मारे गए? गेट ऑफ इंडिया, that's right. हमारे संसद पर हमला, क्या बात है? And we shamelessly watch the match. If match is going to bring peace, तो एक ही काम करो ना, हमेशा जो बॉर्डर है LOC वगैरह वगैरह उधर ही मैच खेलते रहो. सो जो टेररिस्ट है वो भी देखते रहेंगे, वो भी देखते रहेंगे, हम भी जाएंगे, तो पीस शांतता होगा ना उधर. तो पॉलिटिशियन की कोई जरूरत नहीं. लेट आवर बॉयज प्ले क्रिकेट एवरी डे. लेट इट बी वन डे but play. Yes. Wonderful. Absolutely wonderful. Maybe we should try it. I'm not against game, cricket. No. इस जैसे कि कहते हैं अंग्रेजी के बारे में काफ़ी ये होते हैं, अंग्रेजी बंद होना चाहिए, होना चाहिए, मूर्ख बना है. You can hate English or English, That's but right. don't hate the language. You know, don't hate the language. You can hate the Pakistani team or whatever it is, but not the cricket. Sir, the parliament elections are due this time. Yes. The Lok Sabha elections are due. In 95, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की जो युति थी, आपने 31 सीटें जीती थी. Out of 48. 33. All right, 33, not 31, 33, right. It was between 31 and 35, I remember, so 33. How many seats do you expect to win this time? Just a wild guess, sir. No. Rather difficult to assess. Will the performance be better than last time? गवर्नमेंट की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस तो वर्स्ट. The Maharashtra never experienced such a bad government, you know. That apart, as I had told you in the beginning, that Uddhav had been to Nagar and That's he had a terrific, a huge meeting, mammoth. So that you think will be translated into a bit of a landslide? If crowd has any meaning, not all the time, but I can give you a guarantee that effect, keeping quiet, silently listening to the man or leader, than road show. तो रोड शो तो हल्ला गुल्ला होता है. क्या है, कौन नजदीक से क्या देखना. This transfer of your star cast. जी. हमेशा क्या होता है, कल जो कांग्रेस में थी और था वो अभी बीजेपी में, और जो बीजेपी में थे और थी वो कांग्रेस में, और वी फॉर विक्ट्री करते. किसकी विक्ट्री? तुम्हारे आने जाने की और क्या. और शरद पवार ने कहा कि हमें कोई जरूरत नहीं. अरे आपके पास तो कोई नहीं आते, बिकॉज यू आर ए बैड प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर एंड नोबडी विल बिलीव एंड ट्रस्ट योर एग्रीमेंट. कि सारा पैसा देगा ना देगा. बाला साहब, एक आखिरी सवाल चलते चलते. I know we've really stretched you out today, but there was a rumor of a bit of a problem as far as Uddhav and Raj are concerned. What is it? In terms of the fact that everybody talks about the tension between them. No. Is there any tension? No. Absolutely not. So that is a creation of the media, that is including Raj, us. Only problem is Raj stays there at Dadar. Ji. And Uddhav is available here. That's right. He stays upstairs and I stay on a second floor. So it is amenable actually. I mean, he can come discuss things with me. When Raj comes, and if he is called for, he attends. He attends all the leaders' meetings. Wonderful. Yes. Right. So and they have declared. How many times you want them to declare the same statement again and again? Till you get satisfied. You will never get satisfied. We have got that guarantee. They have said, and I am saying it again and last, that is, if there is going to be any hitch or any problem between us, we will not disturb the relation. We will leave politics, but we will maintain our relation.
That's wonderful. That is clearly said. Absolutely, it appeared in the newspapers. Bala Sahib, thank you very much for granting us such a long interview. So nice of you, sir. Thank you very, very much. And we must thank you again for the fact that you left Mumbai for the first time in 10 years only to come to Lucknow. You know, my For two that also, we elements must thank are, you. if they would have not been there, I would have went on touring. I will. And I have to move now That's right. for my propaganda. I have to. Correct. तो यानी आप प्रचार करेंगे. In 1990, I have taken 164 meetings in Maharashtra. That's right. 90. जवानी थी उस वक्त जरा, और भंडारा तक मैं गया था. आप 95 में भी गए थे, मुझे याद है. 95 में, मगर उन्होंने कम कर दिया हमारा कोटा. और इस बार I have taken so many meetings, but nights, dinner, I used to take early in the morning at 5, 5:30, 6 o'clock. Early in the morning, the dinner. That's right. The lunch in the evening. So much so. And there was no restriction that 10 o'clock प्रचार बंद. नहीं. कितने बजे भी चलती रहती गाड़ी. When I reached Kandahar at about 2:30 early in the morning, people were sitting on footpath and roads and all, waiting for me. And so this time, how many meetings do you plan to address? कितनी meetings? At the most, I may go up to 15. 15. Yes. They are making the chart actually. और हम अपने दर्शकों से वादा करते हैं कि बाड़ा साहब की जो भी मीटिंग रहेगी उसका सीधा प्रसारण आपको जरूर देखने को मिलेगा. धन्यवाद. Thank you, sir. Thank you very much again, and all the very best for the election, sir. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Jai Hind, sir. Thank you. Jai Maharashtra. Yes. Thank you, sir.